मैंने लाइव कर दिया। सर ने कर दिया ज्वाइन? बस ज्वाइन कर रहे हैं। हाँ सर, ज्वाइन कर लीजिए ना। हेलो सर, विजय गुप्ता। नहीं, आपको जो मीटिंग आईडी भेजा ना उसको डाल लो। हाँ, नहीं, अच्छा नहीं सर, वो डिटेल भी नहीं मांगी आपको मीटिंग आईडी में ना, पता नहीं कैसे मांग रहा है। भर दो बस आप तो अपना नाम डाल के, तो बाकी तो सर कुछ भी। अच्छा, हाँ, पता नहीं कैसे करने लग गया, मैंने हटा भी दिया था, वो फिर मांग रहे। ठीक। हाँ सर, गड़बड़ियाँ हो जाती है। नमस्कार सर। नमस्कार विजय जी, नमस्कार संगम जी। नमस्कार, वेलकम सर। आज सर को आज थोड़ी सी ज्वाइन करने में भी मेहनत करनी पड़ेगी सर को असल में ना। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। ठीक है। तो 2 सितंबर से हम बना रहे हैं ना, तो जो हम अप्लाई जितना कर देंगे उसे हम प्रोजेक्ट में डाल देंगे। विजय जी स्पीकर व्यू कर दीजिए आप। हाँ नहीं, कर दिया। Shall we start? यस। Namaskar friends, on a very good evening to all of you. We welcome you on behalf of Chamber of Chartered Professionals for today's webinar. We have two distinguished speakers with us, CA Pramod Jain sir and CA Sangam Agarwal ji. और हमारे साथ हैं CA विजय कुमार गुप्ता, who is the founder of Chamber of Chartered Professionals. नमस्कार विजय जी। नमस्कार जी, नमस्कार। और हमारे साथ पूजा गुप्ता जी हैं, कंपनी सेक्रेटरी पूजा गुप्ता जी. She will be moderating today's session. So the session is divided into 2 parts. First 1 hour will be taken by Pramod sir, and the next 1 hour will be taken by Sangam Agarwal ji, and we will be taking question and answers after the program, up towards the end of the program. और in between अगर आपकी कोई queries हैं तो Q&A ऑप्शन के अंदर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपना. और this program is also live on YouTube, वहाँ पे आप अपनी queries put up कर सकते हैं. तो पूजा जी will be taking up your queries. So I again welcome all the speakers and all the persons who have joined the webinar, and I request Pooja ji to please introduce Pramod sir to the audience and invite him for the session. पूजा अनम्यूट करो अपने आप को। Good afternoon to everyone and happy Navratras to all of dear friends here. So it is an immense pleasure for me here that I am here as a company secretary and with the eminent personalities, chartered accountant personalities over here, and very humble and kind enough to introduce Mr. Pramod Jain. First time in my life, and I really appreciate all his articles and almost in all the forum I used to read them. So I'm just sharing first time this brief profile for all of you just to have understanding about him. Mostly all of the people here joined here knows him very well, but just for the introduction level I just want to share. Mr. Pramod Jain is a commerce graduate, BCom honors from Shriram College of Commerce, fellow member of the Institute of Chartered Accountants of India, fellow member of the Institute of Company Secretaries of India, and fellow member of the Institute of
Accountants of India. Bachelor of Law. He has qualified Information System Auditor. He is also a member of All India Management Association, also an insolvency professional. Now it is not going to end. Now again, he has also passed the proficiency self-assessment test for independent directors data bank. He has also passed a certification course NCFM of National Stock Exchange of India. Also done certification course CAAT of ICAI, and also done post qualification certificate course on valuation. So this is all about qualification. Now coming towards the positions he held. He has been elected as Central Council member of ICAI for the period 2019 to 21. Apart from being member of more than 25 committees, groups, directorates of ICAI, he is chairman of Valuation Standards Boards and CSR Committee of ICAI for year 2021. Member of ICAI Disciplinary Committee Bench 1 for year 2021 and Vice Chairman of Direct Tax Committee for year 1922 and 2021. He has been nominated as member of Quality Review Board for 3 years from 2020 to 2022. He is the conceptualizer of the portal expertspanel.in, which is one-stop solution for all the queries. There he has given more than 21,500 answers since its launch in the mid of 2018. So he has delivered more than 1100 lectures and articles on various topics: income tax, corporate laws, LLPs, audit, peer review, quality review at more than 170 forums throughout the country. Most of his presentation and articles since 2013 are available for free download at lunavat.com and from 2018 at expertspanel.in also. He is senior partner at Lunavath and Company Chartered Accountant. He is president, founder, convener, and member of various association, circles, committees, etc. of ICI, ICS, and other prestigious bodies and associations. He has been a member of Financial Reporting Review Board, Audit and Assurance Standard Board, Auditing Accounting Standard Board, Taxation Audit Quality Review Board, Ethical Standard Board, Editorial Board, Valuation Standard Board, and Internal Audit Standard Board of ICI. He has been a technical reviewer with FFRB and Quality Review Board and peer reviewer with Peer Review Board. He has authored books on chartered accountants, documentation and compliance for audit and reviews, limited liability partnership, a complete resource book, chartered accountants, documentation and compliance for audits and reviews, importance of LLP after Companies Act 2013, chartered accountants, documentation and compliance under Companies Act 2013, peer review and quality review, limited liability partnership, law, procedure and taxation, documentation for chartered accountants, limited liability partnership, laws and procedure with ready rakhna, fringe benefit tax and banking cash transaction tax, documentation for audits, and accounting standard and caro. He has written various articles on taxation, company law, and audit in various journals. He has a vast practical experience in taxation, audit, and corporate law field, and he has been given consultancy to various corporate and non-corporate entities on taxation matters. So this is all about Mr. Pramod Jain, and we all knows very well about to him. I request Mr. Pramod Jain to take or start a session for today for the benefit of all. Thank you, Pooja ji. Thank you, Pooja ji, for introducing me. Shri Vijay Kumar Gupta ji, the founder of the Chamber of Chartered Professionals and the treasurer of NIRC. Sangam Agarwal ji, Saurabh Gupta ji, and all my dear friends. Sabko mera namaste. The topic today, which I'll be taking in the first hour, is the basics of tax audit, I would say. And yes, what Saurabh ji said, that questions afterwards, but my way is a bit different. My questions are whenever I'm talking in between that only the questions. And I'll be asking certain questions as I usually do. So when I ask a question, I'll request all of you to please answer in the chat box. I'll see in the chat box and then I'll revert back. Because my basic purpose to discuss in this hour is the basic concepts of the tax audit. I am hoping that all our basic concepts are very, very clear. And if not, then let us clear it. There is no issues. There should be no confusion. The basic purpose is that only. So I'll be sharing a presentation and then asking certain questions wherever required. When I'm talking about the basics of the tax audit, it is basically what I
होती हैं मेरे पूरे इनकम टैक्स एक्ट में, तो कोई भी सेक्शन में इनकम टैक्स के अंदर ऑडिट होता है तो वो टैक्स ऑडिट होता है, whether it is 10B, 10BB or 3CEB, whatever it may be. But today what we will be talking about is section 44AB. This is 3CA, 3CB and 3CD. इन्हीं की बात करेंगे, right? इन्हीं की बात करेंगे, बाकी सब्जेक्ट की बात नहीं करेंगे। और वैसे भी हम लोगों के the work of the reviewers are so many, like FRRB, Financial Reporting Review Board, my peer review board, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड, नफरा आ गया, सेबी भी कई जगह करता है, ईडी, सीपीओ, बैंकर सभी कर क्वालिटी रिव्यू बोर्ड। और यहाँ पर टैक्स ऑडिट रिव्यू होते हैं, और कोई भी मेरा अगर ग्रॉस नेग्लिजेंस आएगा तो दैट कैन बी रेफर्ड टू द डिसिप्लिनरी कमिटी ऑफ द आईसीआई। सो प्लीज टेक केयर व्हेन वी आर डूइंग द टैक्स ऑडिट। So what do we mean by tax audit? How we do it? That becomes very, very important now. And when I'm talking about the tax audit, I will be talking about the legislation which is there for assessment year 2021 and afterwards and later on. और कई लोग कहते हैं कि मैंने ऑडिट किया सेक्शन 44AD में। 44AD में कोई ऑडिट नहीं होता। ऑडिट होता है सिर्फ एक ही सेक्शन में, दैट इज 44AB. The audit may be due to 44AD. It may be due to 44AD, but then the audit is under section 44AB. And the related rule is rule 6G, which prescribes the form 3CA, 3CB and 3CD. And the non-compliance thereof is my 271B. So jab सर बीच में आवाज चली गई एक बारी। So kindly unmute yourself, Pramod sir. Kindly unmute yourself. अब आ रही है? Yes, हाँ सर आ रही है। ओके। जब भी मैं ये बात करता हूँ ना कि मेरा ऑडिट होना है या नहीं होना, क्योंकि उस पर मेरी बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं, और वो उसमें वो भी इंक्लूडेड है कि मेरा ड्यू डेट क्या है, रिटर्न फाइलिंग की, सब कुछ उस पर डिपेंड करता है। तो मेरा ऑडिट ओनली एंड ओनली सेक्शन 44AB में होता है, और मेरे को सिर्फ ये 5 क्लॉजेस देखनी है। आई हैव टू जस्ट सी दीस 5 क्लॉजेस। सो व्हाट आर दीस 5 क्लॉजेस? लेट अस जस्ट रिवाइज इट। एवरीवन नोज इट. Let us just revise it. Yes, if my assessee is having a business income and his sales or gross turnover is exceeding rupees 1 or 5 crore, then my audit is due to section 44ABA. In case my assessee is having a professional income, then his gross receipts, if it is exceeding 50 lakh rupees, then my audit would be due to section 44ABB. In case my assessee is having a business income in the nature of 44A, BB or BBB, that is goods carriage vehicle, for the non-resident exploration of mineral oils, for foreign company, my power projects, and my income is less than the deemed profit. In that case, my audit would be due to section 44ABC. In case of profession, if my gross receipt is exceeding 50 lakh rupees, then audit होगा मेरा 44ABB में। लेकिन अगर वो मेरा 50 लाख से नीचे है और मेरा deemed profit 50% से नीचे है, then my audit and my total income is exceeding the maximum amount not chargeable to tax, then my audit would be due to section 44ABD. And in case I'm covered under 44AD4 and my total income is exceeding the maximum amount not chargeable to tax, then my audit would be due to section 44ABE. Now, if we talk about these 3 CDE, these 3 are all related to presumptive incomes. And the diff is that in case of 44ADA and AD4, my 2 conditions are there. One is 44AD4, second is deemed profit less than 50%. But the second condition is my total income should also exceed the maximum amount not chargeable to tax. And some of our members have a feeling that this maximum amount not chargeable to tax is 5 lakhs. It is not 5 lakhs. It is 2.5 lakhs for individuality. For partnership firm, it is mere 100 rupees. So I have to be very careful about it. But in case of 44AE, my goods carriage vehicle, there is no concept of my total income exceeding the maximum amount not chargeable to tax. A simple example, a person is having, say, 2 trucks. And my total income, if I say,
is 1,80,000 due to the presumptive income, 7,500 rupees per month, then it is fine. But if I'm showing less than 1,80,000, then I have to get it audited under section 44 ABC. Point number one. Point number two, it is for goods carriage vehicle. If my vehicle's gross vehicle weight is less than 12 metric tons, then this rate is 7,500 rupees per truck per month. But if the truck's gross vehicle weight is exceeding 12 metric tons, in that case, it is 1,000 rupees per month per truck on gross vehicle weight or unladen weight, as the case may be. So if the truck's gross vehicle weight is 50,000 rupees, so it would be 50,000 rupees per month per truck. So in case the assessee is having 2 trucks and both gross vehicle weight is 50 metric ton, in that case they have to show at least 6 lakh rupees. If they don't show 6 lakh rupees, they have to get it audited. And in this case, the person could be any person. It could be individual, it could be HUF, it could be partnership firm, it could be an LLP, it could even be a private limited company. So please take care of this. We might be missing out on this. So please take care, right? Rule 6G, yes, it prescribes the forms. And the forms are 3CA, 3CB, and 3CD is annexed to both these forms. So my first question here to all of you, which I request you to please answer in the chat box, कि when do we issue form 3CA? हम 3CA कब issue करते हैं? When do we issue form 3CA? विजय जी कहना when audited under any other act. और किसी का व्यू? When we have audited, मोहन कोडरी जी का भी कहना है, मोहन जी का भी कहना है, yes, audited under act. So मेरा second question, मिश्रा जी का भी यही कहना है. So my second question. Now there is a private limited company which was incorporated, say, on 1st of March 2020. So its turnover in the first month itself was 6 crore rupees. So you have to issue its tax audit report. तो कौन सा फॉर्म इशू करेंगे? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, 3CA या 3CB? This is my second question. 3CA or 3CB? मोहन जी का कहना है 3CB, मनीष जी का कहना है 3CA, शंकर जी का कहना है 3CB, विजय जी का 3CA, मिश्रा जी का 3CA. ये मोहन जी, why did you say 3CB? It is a private limited company, so why 3CB? शंकर जी ने भी 3CB का, why? राजीव गुप्ता जी भी 3CA कह रहे हैं. ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, फिर भी इसका रीजन है, आप करीब सही है, बट एग्जैक्ट आंसर यही है, सही आंसर यही है कि यस, इट द आंसर इज 3CB. एंड द रीजन, हमारा पर्पस आज सब कंसेप्ट क्लियर करने का, इसलिए बता रहा हूँ. Why 3CB? Because under the Companies Act 2013, if a company is incorporated on or after 1st January, then as per the Companies Act, the financial year shall mandatorily end 31st March next year. तो कंपनीज एक्ट में तो इसका ऑडिट होगा ही ना, हो ही नहीं सकता, मैंडेटरी है, तो उसका ऑडिट होना ही मार्च 21 में है. So even though it is a private limited company, it would be 3CB because it is not being audited under the Companies Act. So March 20 के अंदर 3CB जाएगा, March 21 में क्या जाएगा, 3CA या 3CB? March 21 में क्या जाएगा, 3CA या 3CB? March 20 में तो 3CB हो गया. चंद्रशेखर जी का 3CA, शंकर जी का भी 3CA, मिश्रा जी का भी 3CA, मोहन जी का भी 3CA, विजय जी का भी 3CA, है ना, उर्मिला जी का भी कहना 3CA. मार्च 21 के अंदर भी 3CB जाएगा. अरे अभी हमने थियोरेटिकली पढ़ा, when the accounts are audited under any other law, which accounts? The accounts for which I am filing the ITR. ITR कौन से पीरियड का जा रहा है? 12 महीने का. कंपनी एक्ट में ऑडिट कितने महीने का हो रहा है? 13 महीने का. क्या हम 13 महीने की बैलेंस शीट फाइल कर देंगे और कहेंगे जिसको प्रोपोर्शनेट कर लो?
ऐसा नहीं होगा. So for March 21 also form 3CB. Yeah, 3CB. So for March 21, 2 balance sheets, 2 audits and 2 fees. Fine. चलो ये तो this was a case of a new company. Let us talk about an old company. Let us talk about an old company, and the purpose again is to clear our concepts. That's why I'm asking. मेरी एक company थी which was incorporated in 2010, and during the financial year 1920, this company was converted into a limited liability partnership. LLP में convert हो गई से on 1st of November. So for this 7 months, for this private limited company, old private limited, I have to file an ITR for which tax audit is required, and LLP also I will be filing for 5 months. So for this company, when I am doing the tax audit, whether I'll issue the 3CA or 3CB, for this private limited company, when I am filing the tax audit report, I will be issuing 3CA or 3CB. एक ही आंसर आया. विजय जी फ्रांसिस जी का कहना है 3CA, मोहन जी का कहना है 3CB, सिमरन जी कह रही है 3CB, आई गेस. मिश्रा जी कह रहे हैं 3CA. मोहन जी, सिमरन जी, why 3CB? It is an old company, so why 3CB? We should know the reason. Why 3CB? LLP का कोई लेना देना नहीं है. मैं तो अभी कंपनी की बात कर रहा हूँ. प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की रिटर्न फाइल को उसका टैक्स ऑडिट है. इट्स नॉट एन LLP मोहन जी. 2 रिटर्न जानी है, एक 7 महीने की कंपनी की. मैं उस कंपनी की बात कर रहा हूँ. दैट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की रिटर्न तो अलग जानी है ना, उसका टैक्स ऑडिट अलग होना है. भाई देखो, पहले तो हम ये समझ लें कि सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ओनली चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, they can conduct an audit of a financial statement, no one else. So you know, we can, and anyone can do any subject. It could be GST, income tax, company law, RBI, FEMA, RVO, valuation, whatever, but audit of financial statement only and only chartered accountant in practice, no one else. So I have to be very sure about audit provisions, at least if I'm into that practice, right? So in this case, there would be 2 returns, one for the company, one for the LLP. I'm talking rightly about the company. And in this case of a company, the form, though it is a private limited company and it is an old private limited company, there would be form 3CB. Why? Why? The reason is because वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी. 31 अक्टूबर तक मैं ऑडिट कर रहा हूँ. आज क्या, आई एम एन ऑडिटर ऑफ दैट कंपनी. I don't hold the office of the auditor the moment the company is converted. There is no company. There is no board of directors. There are no shareholders. So audit Companies Act में तो नहीं होना ना. Terminology is audited under any other law. It is not being audited under any other law. Hence 3CB, right? ये जो LLP की जाएगी 5 महीने की रिटर्न, इसका जो टैक्स ऑडिट होना है 3CA या 3CB. विजय जी का कहना है 3CA, मोहन जी का भी कहना है 3CA, राइट? सही कह रहे हैं, बिकॉज LLP एक्ट में ऑडिट होता है. LLP एक्ट में ऑडिट होता है, इसलिए LLP का जब भी टैक्स ऑडिट होगा तो 3CA जाएगा, बिकॉज वहां पे LLP एक्ट में ऑडिट का टर्नओवर की लिमिट है 40 लाख. तो 1 करोड़ तो क्रॉस कर रहा है, तो 40 लाख तो कर रहा है. माय सेकंड क्वेश्चन आउट हियर इज, when I am doing an audit of the LLP under the LLP Act, what is the format of the audit report? Audit report का format क्या होगा?
यस, नो स्पेसिफिक फॉर्मेट, तो रिपोर्ट तो इश्यू करूंगा या नहीं करूंगा? सर ऐसा नहीं हो सकता ना कि मेरे अलावा मैं कर नहीं सकता, मेरे अलावा कोई कर नहीं सकता और मुझे करना नहीं आता। मेरे अलावा कोई कर नहीं सकता और मुझे करना नहीं आता, मुझे पता ही नहीं क्या करना है। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना दोस्तों, ऐसा तो कभी भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, कंपनी रिपोर्ट का फॉर्मेट फॉलो कर लेंगे कंपनी से रिपोर्ट का फॉर्मेट कहाँ दे रखा है? सर। कंपनीज ऑडिट का रिपोर्ट फॉर्मेट और उसमें कंपनीज के सेक्शन सारे हटा देंगे। नहीं, पर वो कंपनी से रिपोर्ट का ऑडिट का फॉर्मेट कहाँ है? वो तो वो कहाँ से लेते हो? अच्छा अच्छा, वो भी सर गाइडेंस नोट फ्रॉम आईसीआई। जब भी ऑडिट की बात हो विजय भाई, आपको इधर उधर कभी तो इंस्टीट्यूट पे भी विश्वास करो। आईसीआई मैंने बोला ना गाइडेंस। हमेशा गूगल के ऊपर नहीं जाना चाहिए नहीं, या लिस्टेड कंपनीज की बैलेंस शीट पे नहीं जाना चाहिए। जब भी कभी डाउट हो भाई साहब, सिर्फ ऑडिट से रिलेटेड कुछ भी हो, ऑलवेज स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, और फ्रांसिस जी ने बिल्कुल सही कहा, एसए 700, 705, 706 कंपनीज का भी फॉर्मेट वहीं से आता है। चाहे कंपनी हो, चाहे एलएलपी हो, चाहे आपका ये आपने सीसीपी का ऑडिट कराना हो, चाहे आपने एनआईआरसी का ऑडिट कराना हो, चाहे आपने किसी आरडब्ल्यू का ऑडिट करना हो, ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट एसए 700, कहीं और देखने की जरूरत नहीं है। कई लोग पूछते हैं ना सर इस बार कोई ऑडिट में कोई रिपोर्ट में चेंज आया, कहीं नहीं देखना, एसए 700, 705, 706, राइट। चलिए गुड। तो आज हमने अभी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से हमने ये देख लिया, तो व्हाट डू वी मीन बाय ऑडिटेड अंडर एनी अदर लॉ, एंड देन 3CB इज एनी अदर केस एंड 3CD इज, एंड अगर मैं इसकी कंप्लायंस नहीं करता हूं तो पेनल्टी मेरे को 0.5%, मैक्सिमम 1.5 lakhs। फाइन। अब हमने 44AB समझ लिया, अब कुछ हमको 44AD और ADA से रिलेटेड समझना है, और ये हमको पता है प्रोविजन, तो इसको समझते हैं एक फ्यू क्वेश्चंस के थ्रू अगेन, ताकि हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जब क्वेश्चन सामने आता है एंड वी ट्राई टू पुट अवर माइंड एंड ट्राई टू आंसर, तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ आंसर करना चाहिए। जब आंसर करते हैं तो कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, चाहे हम गलत हो चाहे सही हो, हार्डली मैटर्स, हमारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। आज के इस सेशन के अंदर मान लीजिए मैं कुछ पहले गलती कर रहा था, कोई दिक्कत नहीं है, अब इंप्रूव कर लो, जब जागो तब सवेरा, कोई दिक्कत नहीं, और अच्छा कर रहा हूं तो बहुत बढ़िया, और अच्छा करना चाहिए मेरे को। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ कोर्स here that Mr. A, he has started manufacturing. So in the first year his turnover, which was all in cash, was 150 lakhs, 1.5 crore, and net profit was 8 lakh, total income 8.5 lakhs. So this turnover 150 lakhs, that is 1.5 crores, net profit 8 lakhs, which is less than 8%, less than 8% of the turnover. So my first question, can Mr. A, for this manufacturing where the profit is less than 8%, avail the benefit of section 44AD? Can he avail the benefit of section 44AD? मिश्रा जी का कहना है नो, मोहन जी का भी कहना है नो, विजय भाई का कहना है यस। विजय भाई कैसे 8% से नीचे तो कैसे ले लेंगे? सर ऑडिट करना पड़ेगा ना, 8% से कम है तो। मैं कह रहा हूँ 44AD का बेनिफिट ले सकते हैं क्या? सर मेरे को एबी सुना, सॉरी सर, मैंने सोचा एबी की ऑडिट की बात कर रहे हैं। ना, मैं अभी 44AD की बात कर रहा हूँ। 44AD ऑफ कोर्स 8% से नीचे है तो नहीं ले सकते। नहीं ले सकते। हरे कृष्णा जी भी कह रहे हैं, वेंकटा राघवन जी भी कह रहे हैं नहीं ले सकते, बिल्कुल सही। सेकंड क्वेश्चन, क्या इसका ऑडिट होगा 44AB में? क्या इसका ऑडिट होगा सेक्शन 44AB में? वेंकटा राघवन जी, मिश्रा जी, विजय जी का, शंकर जी का, संजय कावले जी का, राजीव कोता जी, सबका कहना है यस। सो यस, द आंसर्स आर नाउ करेक्ट। 44AD no, because the profit is less than 8%, and AB is yes, because my turnover is exceeding 1 crore rupees, right? Second question, this lady, Miss B, she's a lady doctor, she's a doctor. So from her doctor, she is receiving a fee which is 45 lakhs. So from this 45 lakhs turnover, her gross receipts, the net profit is 25 lakhs, which is more than 50%. Also she is selling medicines, ये बहुत जगह केसेस हैं।
for which she has taken the GST number also. So from this trading activity, her turnover is cash, in cash 90 lakhs, and the net profit is 10 lakhs, which is more than 8%. So can this lady doctor, for her trading activity where the profit is more than 8%, can she avail the benefit of section 44AD? Can she avail the benefit of 44AD for the trading activity? विजय भाई का, मनीष जी का, संजय जी का, सबका कहना है yes. Okay. Second question. Can this lady doctor, for her professional fee, where the profit is more than 50%, avail the benefit of 44ADA? मनीष जी का, विजय जी का, क्रांति कुमार जी का, विश्वनाथ नायक जी का, सबका कहना है yes. Great. संजय जी का भी. Third question. Her income, her turnover from the trading income was 90 lakhs and professional income, gross receipt was 45 lakhs. So दोनों को total करें तो 1 करोड़ क्रॉस कर गया सारा कैश. तो क्या इसका टैक्स ऑडिट होगा सेक्शन 44AB में? क्या इसका टैक्स ऑडिट होगा 44AB में? फ्रांसिस जी, क्रांति जी, संजय जी सब कह रहे हैं नो. Right? So let us see the answers. The answers: 44AD no, 44AD yes, 44AB no. Why? Why AD no? 44AD no because my section 44AD says where an assessee is receiving a professional income, the assessee is barred to avail of section 44AD. assessee ही कोई section ही applicable नहीं है. ऐसा नहीं है कि मैं इस इनकम के लिए ले लूं, इसके लिए ले लूं, ऐसा नहीं है. assessee को ही अलाउड नहीं है. So no 44AD, 44ADA yes because इस सेक्शन में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. AB no yes because it is not falling under any of these clauses. A B C D E, बिजनेस 1 करोड़, प्रोफेशन 50 लाख, CD अभी हमने पढ़ा, किसी में फॉल नहीं करता. Hence no audit. Third question in this series, Miss C. She's started her trading. पहला साल था तो उसने समझ लीजिए her turnover was 80 lakhs all in cash and her net profit was 4 lakhs and total income was 3 lakhs. So her turnover 80 lakhs, net profit 4 lakhs, which is less than 8%, 6%. Less than 8%, 6%. So my first question here, can this lady see for her trading where the profit is less than 8%, can she avail the benefit of 44AD? Can she avail the benefit of section 44AD? मोहन जी, मनीष जी, संजय जी, हरे कृष्णा जी सब कह रहे हैं. Okay. Second question, क्या इसका ऑडिट होगा सेक्शन 44AB में? As the profit is less than 6%, 8%. क्या इसका ऑडिट होगा सेक्शन 44AB में? मोहन जी, विजय जी, क्रांति जी सभी का कहना है यस. वेंकट जी का भी कहना है यस. शंकर जी, we are not talking about planning. We are not talking about planning. Let us understand the concepts. राजीव गुप्ता जी का कहना है नो. बाकी सभी का yes. Let us see the answers. Answer: there is a change. There is a difference. AD no, AB also no. Why? AD no सबको पता भाई 8% से नीचे. ठीक है. AB no भाई कौन से क्लॉज के अंदर ऑडिट करूंगा? A में 1 करोड़ क्रॉस किया नहीं, B में नहीं, C में नहीं, D में नहीं, सब कहते हैं E में. अगर E की बात करते हैं तो सेक्शन क्या है? सेक्शन 44ABE अभी हमने देखा, वो कहता है इफ इट फॉल्स अंडर सेक्शन 44AD4. अब 44AD4 पढ़ना पड़ेगा इसके लिए. 44AD4 कहता है अगर आपने कभी पहले 44AD का बेनिफिट लिया और उसके बाद अगर किसी 5 साल के अंदर आपने नहीं लिया
तो आपको जिस साल से नहीं है, आपको अगले 5 साल तक बुक्स मेंटेन करके ऑडिट कराना है। मैंने तो कभी 44AD का बेनिफिट लिया ही नहीं, तो मेरे को 44AD4 एप्लीकेबल ही नहीं हुआ। एंड दिस चेंज इज देयर फ्रॉम असेसमेंट ईयर 17-18। तो ये किसी क्लॉज में फॉल करता ही है, तो ऑडिट कैसे करूं? सो नो ऑडिट। प्लीज कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा दोबारा, राइट? लास्ट क्वेश्चन इन दिस सीरीज, Mr. D, he is also doing trading, say trading of yarn. So in the yarn, his total sale was 95 lakhs, and from the yarn only he received the commission of 6 lakhs. So his net profit was 15 lakhs, total income 14 lakhs. So his net profit was more than 8%. So can Mr. D, for the trading income, avail the benefit of 44AD? नो। क्या इसका ऑडिट होगा सेक्शन 44AB में? क्या इसका ऑडिट होगा सेक्शन 44AB में? लक्ष्मी जी, संजय जी, राजीव जी सब कह रहे नो, विजय जी भी कह रहे नो। इसका आंसर्स 44AD नो, बट AB यस। AD नो बिकॉज उसकी कमीशन इनकम है। AB यस क्योंकि उसकी टर्नओवर तो 1 करोड़ क्रॉस, रिसीव्स तो 1 करोड़ क्रॉस कर गई। 95 + 6 1 करोड़ क्रॉस कर गई, तो ऑडिट होगा। 44AD मेरे को ये कहता है कि अगर मेरी चारों में से किसी भी एक सोर्स से इनकम हो, तो मेरे को सेक्शन 44AD ही एप्लीकेबल नहीं है। वो 4 सोर्स कौन कौन से हैं? कमीशन, फर्स्ट, सेकंड ब्रोकरेज, थर्ड एजेंसी कमीशन एंड फोर्थ प्रोफेशन। हमने ये प्रोफेशन का एग्जांपल यहां देखा, कमीशन का एग्जांपल यहां देखा। इसके अलावा एक है मेरा एलिजिबल बिजनेस। वो एलिजिबल बिजनेस मेरा गुड्स कैरेज व्हीकल का है। वो कहते हैं कि उस बिजनेस का अगर आपका नेचर होगा तो आपको 44AD का नहीं मिलेगा। प्लीज एनी कोई क्वेश्चन यहां तक हो तो देख, यू कैन आस्क इन योर चैट बॉक्स। कोई क्वेश्चन यहां पर हो तो यू कैन स्टिल आस्क, यू कैन एनी टाइम आस्क। मिस सी को भी मैं एक्सप्लेन करूंगा दोबारा, ठीक है? Miss C, I'll explain again where I'll summarize the whatever we are discussing right now. एक ये 44AB में change आया, and this change is there from assessment year 2021, March 20 onwards applicable है। क्या कि मेरा 1 करोड़ की लिमिट को 5 करोड़ तक में भी चेंज किया गया। So now I have 2 limits, one is 1 crore, second is 5 crore, and 5 crore if I have 2 conditions and both are met. What are the conditions? First, if the aggregate of all amount received, the cash portion does not exceed 5%, and my payments aggregate cash portion does not exceed 5%. So let us take a very simple case. My turnover is 4 crores. My receipts cash portion is less than 5%. My payments cash portion is more than 5%. My limit is 1 crore. But if my payments cash portion is also less than 5%, then my limit would be 5 crore. Let us understand this through an example. ये एक केस है प्रोप्राइटरशिप का। ये एक केस है प्रोप्राइटरशिप का, और प्रोप्राइटरशिप केस में क्या है कि इसकी सारी पेमेंट जो आई है वो बैंकिंग चैनल से, सो उसका कैश पोर्शन इज लेस देन 5%। जो मेरी रिसिप्ट्स है, वो रिसिप्ट्स में क्या है, रिसिप्ट्स के अंदर मेरी जो सेल्स है, उस सेल्स का जो 4 करोड़ के सेल्स है, और उसमें कैश पोर्शन सिर्फ 10 लाख रुपए है। ये 4 करोड़ का 5% होता है 20 लाख। प्लस प्रोप्राइटर था तो उसने अपने आप को कैपिटल इंट्रोड्यूस किया कैश में 15 लाख रुपए, प्लस उसने बाहर से लोन लिया 10 लाख रुपए का एनईएफटी से। सो द क्वेश्चन इज, विद दीज फैक्ट्स क्या इस प्रोप्राइटर का टैक्स ऑडिट होगा? क्या इस केस में इसका टैक्स ऑडिट होगा? नो। वेंकटा जी, दीप्ति जी, राजीव जी, मनीष जी सब कह रहे हैं नो। द आंसर इज यस।
इस साल मैंने ऑडिट करना है, आई हैव टू सी टोटल रिसिप्ट्स। मेरे को रिसिप्ट्स और पेमेंट्स अकाउंट बनाना है जैसे मैं 11th 12th में बनाया करता था। ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस, क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंस, ये सारे रिसिप्ट्स। क्या इसमें कैपिटल नहीं आएगा? क्या इसमें पेमेंट्स में ड्राइंग्स नहीं आएंगी? मैं फर्म का रिसिप्ट पेमेंट बना रहा हूं ना, ऐसे रिसिप्ट पेमेंट बनाना है, फिर इसका कैश पोर्शन देखना है। होएंगी, बिल्कुल होएंगी, राइट? इस साल मैंने करना ऑडिट, तो प्लीज टेक केयर। एक इसमें छोटा सा क्वेश्चन और, मान लीजिए कि मेरा एक असेसी है जिसकी टर्नओवर है 4 करोड़ और उसका रिसिप्ट्स का कैश पोर्शन है लेस देन 5% और उसकी पेमेंट्स का भी कैश पोर्शन है लेस देन 5%। तो क्या मैं, अब मेरा लिमिट 5 करोड़, लेकिन क्या मैं ऑडिट कर दूं? ये क्या ऑप्शनल है? ये ऑप्शनल है कि मैंडेटरी है? दिस 5 करोड़ के लिमिट, इज इट मैंडेटरी और ऑप्शनल? मैंडेटरी। विजय जी, मनीष जी, विश्वनाथ जी, सबका कहना मैंडेटरी। मान लीजिए मैं ऑडिट नहीं कर सकता इस केस में, इस केस के अंदर मैं ऑडिट नहीं कर सकता, यही हुआ ना? एंड यस, द आंसर इज मैंडेटरी, आंसर इज मैंडेटरी। इस केस में अगर मैं, कोई कहता है, क्योंकि कई क्वेश्चन आते हैं सर ऑडिट कर दें, क्लाइंट कह रहा है वो ऑडिट 44 ABA का तो नहीं है, मेरी ड्यू डेट 31 जुलाई ही रहेगी। प्लीज टेल सच क्लाइंट्स कि इस बार तो चलो आपकी डेट 30 नवंबर है, अगले बार से 31 जुलाई तक आ जाना। गवर्नमेंट ने आपको एक रिलीफ दिया, आपका ऑडिट नहीं होगा, लेकिन 54, 54F, 43B, 40A, TDS वाले, वो सारे आपने 31 जुलाई तक जमा करा के फिर रिटर्न फाइल करनी है। सो प्लीज टेक केयर, टेल देम। एक क्वेश्चन और लेते हैं छोटा सा, ये कि पार्टनरशिप फॉर्म है, ये फॉर्म हुई थी असेसमेंट ईयर 1920 में, ये फॉर्म ही असेसमेंट ईयर 1920 में हुई और इसका टर्नओवर था 1.25 करोड़ और नेट प्रॉफिट था मान लीजिए 10%। इसने अपना ऑडिट करा लिया 44 ABA में, ये फैक्ट है। अब वो नेक्स्ट ईयर 2021 में आपके पास आया, वो कहता है मेरा टर्नओवर तो इंक्रीज हो गया पर अभी भी 2 करोड़ से नीचे है और मेरा नेट प्रॉफिट अभी भी 10% है। वो आपके पास आता है, ये कहता है कि भाई मेरा जो कैश पेमेंट्स का दैट इज लेस देन 5%। तो क्या इस केस में, पिछले साल तो इसका ऑडिट हुआ था 44 ABA में, क्या इस साल इसका ऑडिट होगा 44 ABA में? क्या इसका इस साल टैक्स ऑडिट होगा 44 ABA में? नो। विश्वनाथ जी, लक्ष्मण जी, फ्रांसिस जी, एवरीथिंग नो, बिल्कुल सही आंसर है, नहीं होगा। पर उसका क्वेश्चन साथ में फर्म का ये है, कहता ये तो ठीक है, आप ये बताओ पिछली बार मेरा 44 ABA में ऑडिट हुआ था, क्या इस साल मैं टैक्स ऑडिट मैं 44 AD अवेल कर सकता हूं? कैन आई अवेल ऑफ 44 AD? मेरा तो 10% का नेट प्रॉफिट है, कैन आई अवेल ऑफ 44 AD? विश्वनाथ जी का कहना यस, संजय जी, मोहन जी, राजीव जी, सबका कहना यस। नो, टर्नओवर इज लेस देन 2 करोड़, लेस देन 2 करोड़ तभी तो 44 AD ले सकता है मनीष जी, लेस देन 2 करोड़ से तभी तो 44 AD ले सकता है। 44 AD की लिमिट 2 करोड़ है, सो यस ही कैन अवेल। एंड यस, इस साल इसने नहीं लिया था, 44 ABA में ऑडिट कराया था, इस साल ये 44 AD ले लेता है और 21-22 के अंदर अगर वो कहता है मैं 44 AD नहीं लेता, तो उसका 44 ABA में ई में ऑडिट होगा और 5 साल तक होगा। एक बार ऑप्ट कर लिया, उसके बाद दिस इज माय 44 AD4, राइट? और एक बार ये प्रिजम्प्टिव इनकम्स का ओवरऑल चार्ट समझ लें। ओवरऑल चार्ट है कि मेरा कब, अगर डीम्ड से लेस देन डीम्ड होगा तो कब मेरा ऑडिट के प्रोविजन के हिसाब से कब ऑडिट होगा। अगर मेरा बिजनेस है 44 AD में कवर्ड है, तो अगर मैंने अवेल किया 44 AD और उसके बाद मैंने अवेल नहीं किया 5 साल तक, देन फॉर नेक्स्ट 5 years आई हैव टू डू द ऑडिट इफ इट इज लेस देन द डीम्ड प्रॉफिट। और ये मेरा होगा है कहां पे देर का, 44 AD 4 and 5, और ऑडिट होना है 44 ABE में।
अगर मेरा प्रोफेशन है लेस देन डीम्ड है, मेरे को आगे पीछे 5 साल का नहीं देखना, एवरी ईयर लेस देन डीम्ड ऑडिट कहां दे रखा है 4484 और ऑडिट होना 44ABD में। मेरा गुड्स कैरेज लेस देन डीम्ड ऑडिट होना है 44AE7 एंड 44ABC प्रोविजन ऑडिट का। शिपिंग ऑफ नॉन रेजिडेंट कहता है लेस देन डीम्ड प्रॉफिट इज नॉट अलाउड। ऑडिट के बाद भूल जाओ, आपको तो डीम्ड दिखाना ही पड़ेगा। एंड सेम फॉर ऑपरेशन फॉर एयरक्राफ्ट नॉन रेजिडेंट, बट एक्सप्लोरेशन ऑफ मिनरल्स बाय नॉन रेजिडेंट लेस देन डीम्ड ऑडिट, ये प्रोविजन है। एंड टर्न की प्रोजेक्ट्स ये। अब हम देखें यहाँ पर ऑडिट प्रोविजन में ये मेरे सी और डी और ई में है सारे के सारे प्रेजम्पटिव से रिलेटेड। ए मेरा बिजनेस है और बी मेरा प्रोफेशन है, बाकी तीनों के तीनों लेस देन डीमिंग के प्रोविजंस, राइट। अब एक बार ये शंकर जी आप जो कह रहे थे, एक बार हम इस कंसेप्ट को रिवाइज कर लेते हैं अप टू डेट जो हमने अभी तक डिस्कस किया कि मेरा ऑडिट किस केस में, बिजनेस के केस में। हम सर बिजनेस की बात कर रहे हैं, हम गुड्स कैरेज की बात नहीं कर रहे और बाकी उसकी बात नहीं कर रहे, प्रोफेशन की बात नहीं कर रहे। ऑडिट में बिजनेस में मेरे टर्नओवर के लिमिट्स कब होनी है कब नहीं होनी है। एक लिमिट है मेरी बिलो 1 करोड़, एक लिमिट है मेरी 1 से 2 करोड़, एक लिमिट है मेरी 1 से 5 करोड़, एक लिमिट है मेरी अबव 5 करोड़। सो गवर्नमेंट हैज सिंप्लीफाइड, सो वी कैन अंडरस्टैंड दिस इन वन स्लाइड इटसेल्फ, क्योंकि वो हर बार सिंप्लीफाई करते हैं तो ये सिंप्लीफाइड वर्जन है ऑडिट का। इफ माय असेसीज टर्नओवर इज अबव 5 करोड़, टर्नओवर ऑफ ग्रॉस रिसीव्स, तो टैक्स ऑडिट तो होना ही होना है, मेरे को कुछ देखना ही नहीं है, परसेंटेज प्रॉफिट वगैरह कहीं कोई टेंशन ही नहीं है। अगर मेरा असेसी इंडिविजुअल है, एचयूएफ है या पार्टनरशिप फर्म, इन तीनों को ही और किसी को नहीं, और इन तीनों में से कोई, इन तीनों के अंदर ही कोई उनकी टर्नओवर अप टू 2 करोड़ है और वो 44AD का बेनिफिट लेता है, देन उसका रिसिप्ट पेमेंट्स, कैश का कोई दिक्कत नहीं है, 100% कैश रिसिप्ट, 100% कैश पेमेंट, नो बुक्स ऑफ अकाउंट्स, नो ऑडिट। परसेंटेज प्रॉफिट 8%, 6% उससे ऊपर दिखाना है, वो है उससे ऊपर। बट इफ दिस इंडिविजुअल एचयूएफ और पार्टनरशिप फर्म और कंपनी और एलएलपी, ये तो कंपनी एलएलपी तो 44AD अवेल कर नहीं सकते, लेकिन बाकी ये तीनों, अगर ये सब के सब की टर्नओवर 1 से 5 करोड़ के बीच में है, तो मेरे को देखना है इनका रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स। दोनों अगर 5% से नीचे है तो मेरी लिमिट हो जाएगी 5 करोड़। एक भी मेरा 5% से ऊपर है तो मेरी लिमिट हो जाएगी 1 करोड़। सो सिंप्लीफाइड दे हैव डन। सो एवरी ईयर आई हैव टू सी बिलो 1 करोड़, बिलो 1 करोड़ जो हमने 80 लाख वाला एग्जांपल दिया था, उसका ऑडिट सिर्फ एक केस में होगा, एंड दैट आल्सो ओनली ऑन इंडिविजुअल एचयूएफ एंड पार्टनरशिप फर्म वेयर दे हैव एवर अवेल्ड 44AD अर्लियर। मान लीजिए असेसमेंट ईयर 2018-19 के अंदर उन्होंने कहा जी मेरा नेट प्रॉफिट है 10% और उन्होंने 44AD का बेनिफिट ले लिया 19-20 में आए और वो बोले जी मेरा प्रॉफिट है 4%, कहते मैं 44AD में नहीं जाना चाहता, तो ABE के अंदर ऑडिट होगा। 20-21 के अंदर वो बोलता है जी मेरा प्रॉफिट अब है 12%, कहते मैं 12% पे टैक्स दे दूंगा, 44AD दे दो, आपको नहीं जी नॉट अलाउड, ऑडिट 5 साल तक। सो दिस इज द होल कंसेप्ट, राइट। एंड व्हाट आई टॉक अबाउट, जब मैं कहता हूं ना, जब मैंने एग्जांपल दिया, एक क्वेश्चन दिया था प्रोप्राइटरशिप में कैपिटल ऐड की, you see I have been saying this before this ITR came, I have said this since that union budget came. आप ये देखिए, that has been now further strengthened by the amendment made in the ITR के अंदर ऑडिट इंफॉर्मेशन ITR 356, जहां पे वो बोलता है अगर आप एसएससी अपनी इनकम सिर्फ यहीं पे डिक्लेयर कर रहा है, कहता भाई मैं तो यहाँ पे डिक्लेयर नहीं कर रहा, प्रेजम्पटिव में नहीं है, मेरी नॉर्मल इनकम है, फिर वो आपसे पूछता है आपकी सेल्स टर्नओवर क्या 1 से 5 करोड़ के बीच में, आप कहेंगे यस। फिर वो ये पूछता है आपके एग्रीगेट ऑफ ऑल अमाउंट रिसीव्ड फॉर सेल टर्नओवर ग्रॉस रिसीव्ड्स और कैपिटल अकाउंट लाइक कैपिटल कंट्रीब्यूशन लोन एक्सेट्रा 5%, सिमिलरली एक्सपेंडिचर कैपिटल अकाउंट एक्सेट्रा पेमेंट्स, देन आई हैव टू डिसाइड 5 करोड़ और 1 करोड़, राइट। एनी क्वेश्चंस अप टू दिस पॉइंट प्लीज?
ठीक है, फाइन। एक यूडिन के बारे में आपको बता दूं कि जब मेरे को फॉर्म 3CA इशू करना है तो 2 यूडिन लेने हैं। वन इज फॉर माय फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वन इज फॉर माय फॉर्म 3CA। अगर मैं 3CB इशू कर रहा हूं तो 1 यूडिन लेना है। और प्लीज चूज द करेक्ट क्लॉज इन क्लॉज 8 इन फॉर्म 3CD। और सेम क्लॉज आपको यूडिन में और IT वेबसाइट में डालना है, बिकॉज नाउ दे आर सिंक्रोनाइजिंग द यूडिन एंड द IT वेबसाइट। आपको इनकम टैक्स का कोई भी फॉर्म अपलोड कर रहे हैं हम आज की डेट में, तो आपको उसके ऊपर यूडिन डालना है, फॉर्म के अंदर नहीं है। फॉर्म के बाद अलग आपके पेंडिंग एक्टिविटीज के अंदर आ रहा होगा, उसमें आप यूडिन अपलोड कीजिए। एक हम ये, जैसे मान लीजिए अभी 31 अक्टूबर की ड्यू डेट है, मान लीजिए एक्सटेंड नहीं होती, मान लेते हैं एक बार हो जाएगी वैसे तो, बट मान लीजिए नहीं होती, तो हम रात के 12 बजे बैठ के अपना टैक्स ऑडिट रिपोर्ट अपलोड कर रहे होंगे। हम SSC को बोलेंगे सर प्लीज अप्रूव कर दो, वो कहेगा भाई आज तो मैं जरा बिजी हूँ, मेरे घर में फंक्शन है, या मैं बाहर हूँ, या तबीयत ठीक नहीं है, मैं कल कर दूंगा। आपने अपना काम कर दिया ना। उसको इतना बात बता देना कि ये टैक्स ऑडिट की फाइलिंग की डेट तब मानी जाएगी जब टैक्स पेयर उसको एक्सेप्ट करेगा, ना कि जब टैक्स ऑडिटर उसको अपलोड करेगा। अगर वो 2 नवंबर 4 नवंबर को करेगा तो उसकी डेट 2-4 नवंबर मानी जाएगी, पेनल्टी उसकी वजह से लगेगी। अगर आप 12 बजे तक जग रहे हैं, उसको बोलो जी आपको भी जगना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, मेरी अकेले की नहीं है। ये नहीं है कि अगर आपने मेरे को फीस दे दिया तो आप आराम से बैठेंगे, ऐसा नहीं है, राइट। एंड ऑल्सो प्लीज अपडेट दिस, जो मैंने आपको बोला ना यूडिन आपको साइट पे डालना है, प्लीज अपडेट दैट विद इन द 15 डेज। अभी तो ये आ रहा है, अगर आप 15 दिन के बाद अपलोड कर रहे हैं तो इट विल रेफर इट टू ICI. They have told, we had a webcast with the UDIN director, where also I was the speaker from the ICI. So the additional director of the CPT systems, he came and he said that if the UDIN is not updated within 15 days, we'll make the form invalid. वो पहले 1 अक्टूबर से कह रहे थे, फिर शायद 15 अक्टूबर वो किसी भी दिन कर देंगे। So please take care, right? एक दो छोटे छोटे से क्वेश्चंस और, ये क्या हम प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप के अंदर नोट्स टू अकाउंट्स बनाते हैं? जिसका हम ऑडिट करते हैं उसकी बात कर रहा हूँ। जिस प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप का हम ऑडिट करते हैं उसके अंदर क्या हम नोट्स टू अकाउंट्स बनाते हैं? संगम जी कहते हैं यस, मोहन जी कहते हैं नो। ओके, राजीव जी कहते हैं यस। तो ये मैं जो भी बना रहे हैं तो वो नोट्स टू अकाउंट्स में लिखते क्या है कि द फर्म इज फॉलोइंग मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, fixed assets are stated at cost, depreciation as per income tax act, inventories are stated at lower of cost and net realizable value। इसके अलावा कुछ लिखते हैं क्या नोट्स टू अकाउंट्स में प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप के? कंपनी की, प्रदीप लोटा जी, कंपनी को 44AD एप्लीकेबल ही नहीं है, प्रॉफिट लॉस से कोई लेना ही दे रहा नहीं है, उसको सर टर्नओवर देखनी है, ठीक है। हाँ जी, तो इसके अलावा कुछ हम लिखते हैं क्या नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर? अच्छा, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, क्या हम उसमें रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस दिखाते हैं नोट्स टू द अकाउंट्स में? निशांत जी, थियोरेटिकल मत जाओ, प्रैक्टिकल की बात करो, बिकॉज लेवल 1 50 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर, बाकी डेट वगैरह, लेवल 2 1 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर। लेवल 3 में ऑडिट नहीं होता, लेवल 2 में तो ऑडिट होता है। मैं जिसकी ऑडिट हो रहा है उसकी बात कर रहा हूं, और लेवल 2 में सारे एएस एप्लीकेबल होते हैं। क्या हम कर रहे हैं? मैक्सिमम केसेस में नहीं। अच्छा, क्या इनको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैंडेटरी है? क्या प्रोप्राइटरशिप को? हाँ, मैंडेटरी है। अच्छा, उन सबको मैंडेटरी है, वो कंप्लाई नहीं कर रहे, तो हम अपनी ऑडिट रिपोर्ट तो क्वालिफाई कर रहे होंगे। आर वी क्वालिफाइंग अवर ऑडिट रिपोर्ट? नो। मतलब ये कितने मजे की बात है, हमको पता है कि प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कंप्लाई करने मैंडेटरी हैं। हमको ये पता है वो कंप्लाई नहीं कर रहे, और हम फिर भी उसको क्वालिफाई नहीं कर रहे।
क्यों? कहते वो बेचारा तो मेरी ऑडिट फीस भी नहीं दे पाता, वो क्यों तकलीफ में आए? मैं जाऊंगा ना जेल, कोई दिक्कत आएगी, नेग्लिजेंस आएगी, बैंकर कहेगा, इंस्टीट्यूट कहेगा, मैं जेल जाऊंगा। एसएससी बेचारा क्यों? मैं उसको क्वालिफाई कैसे करूं? उस बेचारे की तो हालत खराब हो जाएगी। कहते तकलीफ जेल, मैं जाऊंगा ना, मेरे को फीस दे नहीं दे, आज वो ऑडिटर चेंज करे, कल चेंज करे, क्या फर्क पड़ रहा है? कहते पर मैं क्वालिफाई कैसे करूं? तो why the auditor should not be held guilty? Just tell me why he should not be held guilty. हमको पता होते हुए भी हम नहीं कर रहे। और AS 18 में है क्या? मेरे को डिस्क्लोजर ही देना है, दे दूं ना, जैसे कंपनीज में देता हूं, परचेज, सेल, क्लोजिंग बैलेंसेस भी देना होता है, सब दे दूं ना, दिक्कत क्या है? AS 22 करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स का प्रोविजन कर देता हूं, क्या दिक्कत है? सिर्फ मेरे को AS 10 कंप्लाई नहीं कर सकता। इट इज नॉट, इट इज स्टैच्यूटरी सर विश्वनाथन जी, इट इज स्टैच्यूटरी। And chartered accountant who is doing audit, it is mandatory by the institute for on him to see the compliance of the accounting standards. assessee को mandatory नहीं है, assessee को नहीं है, पर chartered accountant को तो है। अभी मीटिंग, प्लीज अंडरस्टैंड, assessee का कुछ नहीं बिगड़ेगा, सिर्फ ऑडिटर को तकलीफ है नॉन कंप्लायंस पे। मैं बताऊं कुछ एक केसेस जहां पर रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप में नहीं किए, बैंकर्स ने उस ऑडिटर के ऊपर केस कर दिया फॉर प्रोप्राइटर। इट इज सर, इट इज जिसका मैं ऑडिट कर रहा हूं, जिसका मैं ऑडिट कर रहा हूं, ऑडिटर के ऊपर मैंडेटरी है टू सी द कंप्लायंस। असेसी कंप्लाई ना करे, आप क्वालिफाई करो, नॉट अ डिस्क्लोजर सर, यू हैव टू क्वालिफाई ना। एएस इज नॉट कंप्लाइड फॉर। अच्छा चलो एक बात और बताओ, क्या नोट्स अकाउंट्स में ये लिखते हैं that my debtors loans and advances are subject to confirmation? Debtors loans and advances, creditors are subject to confirmation. Yes, right. तो इस केस के अंदर क्या हम अपना एडवर्स रिपोर्ट देते हैं that the balance sheet profit loss are not true and fair? क्या हम देते हैं कि बैलेंस शीट प्रॉफिट लॉस और नॉट ट्रू एंड फेयर? अपनी एडवर्स रिपोर्ट देते हैं या कहते हैं नो एवरीथिंग इज ट्रू एंड फेयर? आप सोचो, इसका मतलब सोचो, मतलब क्या है? नोट्स टू अकाउंट्स मैनेजमेंट का, असेसी कह रहा है, असेसी ये कह रहा है मेरे जो डेटर्स मैंने 5 करोड़ के दिखा रखे हैं कुछ कंफर्म्ड नहीं है, हो सकता है 1 लाख के हो सकता है 1 लाख के, और ऑडिटर कह रहा है नहीं नहीं उसको नहीं पता उसके बिजनेस के बारे में, आई एम सीइंग एवरीथिंग इज ट्रू एंड फेयर। ऐसे क्वेश्चंस जब भी आते हैं ना, चाहे एफआरआरबी में आए चाहे क्यूआरबी में आए, हर केस के अंदर ऑडिटर के ऊपर जाता है। अगर ऐसी स्टेटमेंट लिखी है तो यू हैव टू से इट इज नॉट ट्रू एंड फेयर, यू नॉट क्वालिफाई विश्वनाथन जी, एडवर्स क्वालिफिकेशन क्या? आप ये नहीं कह सकते ना डेटर्स का पता नहीं, क्रेडिटर्स का पता नहीं, लोन्स एंड एडवांस का पता नहीं, स्टिल इट इज ट्रू एंड फेयर। परवेसिव हो गया ना, मटेरियल परवेसिव बहुत हो गया, तो आपको तो एडवर्स ही देना है ना। Please be very careful. Also, ये क्या आप प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप में प्रीवियस ईयर की फिगर्स दिखाते हैं? प्रीवियस ईयर की फिगर्स विश्वनाथन जी कहते हैं यस, विजय जी कहते हैं यस, संगम जी वगैरह काफी लोग नहीं दिखाते होंगे, बट दिखाना मैंडेटरी है। कहां से मैंडेटरी है? द फ्रेमवर्क फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशूड बाय आईसीआई, अगेन मैंडेटरी ऑन द ऑडिटर, नॉट ऑन द एसएससी। दिखाए, वेरी गुड, नहीं दिखाए तो प्लीज क्वालिफाई। ये मैं बार बार कह रहा हूँ, क्वालिफाई क्वालिफाई, ये क्वालिफाई करना कहाँ है? क्या हम ये प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप में कोई ऑडिट रिपोर्ट इशू भी करते हैं? सर 3CD होता है इशू, हम ऑडिट रिपोर्ट कहाँ इशू करते हैं प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप में? मैं पिछले 5-7 मिनट से सिर्फ यही बोल रहा हूँ, क्वालिफाई करो, एडवर्स रिपोर्ट दो, कोई है जगह देने की? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं संगम जी कि यस 3CA में अगर मैं को करना होता है, कोई अपनी ऑब्जर्वेशन देनी होती है तो पैरा 3 में देता हूं, पैरा 3 में देता हूं रिलेटेड टू 3CD ओनली। But when I am talking about 3CB, then I have to give my observation on 2 points, para 3A for financial statements and para 5 for 3CD.
यहां पर जाएगा सारा। और ऑल्सो क्या मैं इसके अंदर ऐसे 700 यूज कर रहा हूं? मोस्ट प्रॉब्ली नहीं कर रहा हूँ, मोस्ट प्रॉब्ली नहीं कर रहा हूँ। मैं करता हूँ प्लीज सी। मेरे को वैसे तो ऐसे 700 मैंडेटरी है, बट ठीक है, टैक्स ऑडिट के पर्टिकुलर फॉर्मेट की वजह से मेरे को एग्जाम्पशन दे रखी है काउंसिल ने। लेकिन अगर मैं गाइडेंस नोट ऑन टैक्स ऑडिट पढ़ूं अपने इंस्टीट्यूट का 2014 वाला, जो कि लास्ट है, वो भी रिकमेंड करता है, सजेस्ट करता है प्लीज यूज ऐसे 700। आप गाइडेंस नोट छोड़ो, ये छोड़ो, आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड्स में कुछ वर्डिंग बताता हूँ जो कि आपको ऐसे 700 की जो 3CB में डालनी है, उसके बाद आप डिसाइड कीजिएगा कि आपको डालनी है कि नहीं डालनी, और यू आर रेडी टू टेक ऑल द रिस्क। क्या है पैरा 3 की अगर मैं बात करूं 3CB की, वहां पे मैं डालूंगा असेसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन माय रिपोर्ट, इन ऑडिटर्स रिपोर्ट। असेसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई एम राइटिंग इट इन द रिपोर्ट, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन एंड फेयर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट दे आर इन अकॉर्डेंस विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशूड बाय आईसीआई, and these are free from material statement whether due to fraud or error। ये है रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? असेसी की। वर्डिंग बाकी सेम। मेरी टैक्स ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ये मैं अपनी रिपोर्ट में लिख रहा हूं। अगर मैं ये नहीं लिख रहा हूं, then I'm taking an absolute, I'm giving an absolute assurance कि yes it is true and fair, मेरी जिम्मेवारी। लेकिन अगर मैं ये वर्डिंग लिखता हूं, then I'm restricting myself। What do I write? I write our objective is to obtain a reasonable assurance, not absolute। ये नहीं लिख रहा हूं तो absolute ही है ना। About whether these financial statements are as a whole are free from material misstatement or not, whether due to fraud and error। This reasonable assurance, a high level of assurance, but not a guarantee कि जो मैं अपना audit करूंगा as per standards of auditing, that will always detect a material misstatement। मैं ये नहीं कह रहा कि ये लिख देने से मैं सब चीजों से एब्जॉल्व हो जाऊंगा, लेकिन अगर मैंने ऑडिट अपने एसएस के हिसाब से किया, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करके, एंगेजमेंट लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर, मटेरियल मिसस्टेटमेंट का ऐसे 315, मटेरियलिटी लिमिट्स, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन, ये करके रखा, और उसके बाद कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट आ गया तो मैं बच जाऊंगा। एंड ये ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कुछ ऐसा कह रहा हूं जो कि कोई और नहीं कह रहा। ये SS 700 की वही लैंग्वेज है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर रखी है फॉर द कंपनीज, एंड वर्ल्ड वाइड इट इज सेम। सो प्लीज स्टार्ट पुटिंग इट। ये वर्डिंग सारी वही है, वहां से लेके मैंने उसको चेंज किया है जो कि SS 700 के हिसाब से होना चाहिए। और पैरा 5 अगर मैं बात करूं 3CD की, राइट, पैरा 5 ऑफ 3CB एंड पैरा 3 ऑफ 3CA, वहां क्या लिखूंगा? वहां लिखूंगा असेसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस 3CD, उसको साइन करना होता है, उसके सिग्नेचर होने चाहिए। एंड माय रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू वेरीफाई दिस, एंड आई विल डू माय ऑडिट एज पर द गाइडेंस नोट ऑन टैक्स ऑडिट। प्लीज स्टार्ट पुटिंग इट इफ यू आर नॉट। एक आपने चेंज करना, उसके बाद तो बाकी सब में कॉपी पेस्ट ही होगा। एक ये लास्ट स्लाइड लूंगा, मेरा टाइम एक्चुअली हो चुका है। हम टैक्स ऑडिट की बात करते हैं तो हमेशा वी गो क्लॉज बाय क्लॉज, दीज 44 क्लॉजेस, इसी के ऊपर बात। वो कहता है आपने किस प्रोविजन में ऑडिट किया। अब इसमें ऑडिट के अंदर मेरे 2 रिपोर्ट इशू होती है, 3CA। जब मैं 3CB इशू करता हूं, कोई भी क्लॉज A to E की वजह से कर रहा हूँ, A B C D जो मैंने डिस्कस किया। बट जब मैं क्यों क्योंकि ऑडिट तो मेरा हो इनकी वजह से रहा है, बट हो इसके अंदर रहा है। व्हाई? बिकॉज व्हाट आई रीड सेक्शन 44AB तो ये कहता है कि इफ यू आर कवर्ड अंडर एनी ऑफ दीज 5 क्लॉजेस, तो आपको करना क्या है? आपको करना है अकाउंट्स का ऑडिट और एक रिपोर्ट इशू करनी है। फर्स्ट प्रोविजन कहता है 44 AD में, ADA में कवर्ड है तो आपको ऑडिट नहीं कराना। सेकंड प्रोविजन कहता है 44B BBA में तो आपको ऑडिट नहीं कराना। थर्ड प्रोविजन कहता है अगर आपका अकाउंट्स का ऑडिट किसी और लॉ में हो गया तो इस सेक्शन की कंप्लायंस हो जाएगी अगर आपने ये रिपोर्ट इशू किया तो। सो द मेन क्रक्स ऑफ दिस इज गेटिंग द अकाउंट्स ऑडिटेड, और इसके लिए मेरे AS एंड SAs मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बिना अकाउंट्स का ऑडिट नहीं हो सकता। हमारे बहुत सारे, मैं कंपनी सेक्रेटरी भी हूँ, कॉस्ट अकाउंटेंट भी हूँ, LL एडवोकेट भी हूँ, तो ये सब कहते हैं मिनिस्ट्री को कि भाई हम भी कर देंगे, हमको भी आता है ये तो इनकम टैक्स तो। बट ये कौन पढ़ाता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट के अलावा कोई नहीं पढ़ाता। एंड वी शुड नाउ इम्प्रूव इट। ऑलरेडी 1 करोड़ से 5 करोड़ की लिमिट हो गई है। हो सकता है टैक्स ऑडिट
जा भी सकता है, क्योंकि हमारे वो डिपार्टमेंट का ये कहना है कि आपके टैक्स ऑडिट से हमको फायदा ही कुछ नहीं हो रहा, सब कुछ नील नए करके आता है. So we need to improve our audit reporting, please. We need to improve our audit quality. I am telling you very frankly. Time मेरा खत्म हो गया है, तो just वैसे सबको पता है, but फिर भी yes, if anyone wants, this is an experts panel, expertspanel.in, and mobile app also experts panel के नाम से कोई भी यहाँ साइन अप कर सकता है, फ्री है एज ए क्वेरिस्ट, और जब वो करेगा या एज ए एक्सपर्ट भी कर सकता है, फिर कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है ऑन इनकम टैक्स, जीएसटी, कंपनी लॉ, आरबीआई, फैमा, आईसीआई, सो मेनी, या एग्जिस्टिंग क्वेश्चंस भी देख सकता है, और उसके बाद जब क्वेश्चन वो पूछेगा आंसर उसके ईमेल आईडी में आएगा, यहाँ पर भी देख सकता है. बहुत सारे आर्टिकल्स, प्रेजेंटेशंस, वीडियोस, नोटिफिकेशन कैटेगरी वाइज. Now nearly 22,000 already questions have been answered by more than 110 experts over the country. I'll be uploading this presentation on this website, and you can also download this free mobile app जहाँ पे ready to use charts updates 2007 से. Thank you everyone for a very nice interaction and giving me an opportunity to speak. 3CB के observations वगैरह सब मैंने बता दिए. कोई क्वेश्चन किसी का हो तो I can take in a minute because I've got another meeting, so I'll have to leave. Vijay bhai, so sorry. प्रमोद जी बस एक बार ये बता दीजिए डेट कब एक्सटेंड हो गई, up to when we can expect the. वो क्या संगम जी, मुझे एक बार बताओ, मुझे सिर्फ एक बार बताओ, मैं 1 मिनट और ले लेता हूँ. डेट एक्सटेंशन से मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है? नहीं, मुझे बताओ तो सही. डेट एक्सटेंड नहीं होती तो सीए को क्या फर्क पड़ रहा है? एक्चुअली बहुत सारा ऐसा काम है जो क्लाइंट ने सीए को भेज दिया है और सीए के पार्ट पे पेंडिंग हो चुका है. मतलब सपोज उसको 20 टैक्स ऑडिट करने हैं तो अराउंड 10 टैक्स ऑडिट की फाइल उस पे ऑलरेडी आ चुकी है. कब भेजा उसने? मतलब लास्ट 15 डेज के अंदर उसने भेजे हैं बेसिकली. व्हाई नॉट अर्लियर? बट सर क्लाइंट्स फील सम टाइम दैट कि अगर उसने डॉक्यूमेंट दे दिए हैं तो उसकी रिस्पांसिबिलिटी खत्म हो गई है. समहाउ इट इज उसको समझाओ. पेनल्टी आपको लगनी है. Yes. आपने अपना ऑडिटर चूज किया, आपको पता है उसकी कैपेबिलिटी, और आप एंड मोमेंट पे दोगे तो पेनल्टी आपको लग रही है, सीए को नहीं लग रही. आप संगम जी, आप समझो, जब हम मिनिस्ट्री के पास जाते हैं ना, तो वे कहते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर इनकम्पिटेंट. दे आर सीकिंग एडजॉर्नमेंट ना. कैपेबिलिटी नहीं है उनके पास. कहते दे आर नॉट कैपेबल. वो खुद कह रहे हैं कि भैया हमसे काम नहीं हो रहा, एक्सटेंशन. आप पिछले बार का एक्सटेंशन ऑर्डर पढ़ो सर, उसमें उन्होंने लिखा है ड्यू टू लैक ऑफ टाइम विद प्रोफेशनल वी आर एक्सटेंडिंग. तो व्हाई डू वी वांट? जिसको तकलीफ है, जिसको पेनल्टी लगनी है, उसको तो कदर ही नहीं है. जिसको पेनल्टी लगनी है उसने एक बार भी बोला एक्सटेंड हो करवा दो. उसने तो एक बार भी नहीं बोला ना. एक्सटेंड हो जाएगी अपने आप, लेकिन हो ही जाएगी. वैसे तो ऐसी बात नहीं है, बट स्टिल वी शुड बी वेरी क्लियर इन अवर माइंड एंड बी प्रोफेशनल. लेट अस नॉट गो फॉर एक्सटेंशंस प्लीज. एक्सटेंशन करने से एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि सीए की वैल्यू बढ़ाओ, और हम दूसरे के लिए मांगते हैं, डिपार्टमेंट हमको सुनाता है. व्हाई शुड वी लेट देम? दे शुड कम इन टाइम. हम एसएससी के आगे भी झुकते हैं, डिपार्टमेंट के आगे भी झुकते हैं. Let us understand, let us try and raise our own level, then our whole profession will rise. Sorry अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो, but जो मैं कह रहा हूँ let us होगा जो क्लाइंट को हम पेनल्टी लगने नहीं देंगे. अगर नोटिस आएगा तो रीजनेबल कॉज लेके उसकी अप्रोप्रिएट फी लेंगे. Let us not go for extension. Thank you very much. Thank you sir, thank you very much sir. Thank you. Now the next session. Wonderful session, sir. Very wonderful session. Pooja, please introduce Sangam ji. Yeah, I should say first a vote of thanks to Jen sir. It was a wonderful session, extremely wonderful session to enrich the knowledge of the participants or members of the chambers, and to gain confidence to them that how you have to present yourself before the SSE also, before the department also, and to be active in a proactive manner so that you can consult with the SSE in a proactive manner, and with the department also you can create your value. So it was a very wonderful session as always, Pramod sir. I sincerely give a vote of thanks to you from the president of the chamber and from all the members of the chamber.
So respectfully, this is a vote of thanks to you, sir. Thank you very much. So now the next speaker with us is Mr. Sangam Agrawal ji. He is a chartered accountant and practicing professional. So he will be sharing his views for the tax audit for the next 1 hour. So welcome Sangam ji. Thank you very much, Pooja ji. Firstly, I want to express my sincere thanks to Chamber of Commerce and special thanks to CA Vijay Gupta ji to provide me opportunity to share my thoughts on the latest development in tax audit. Somehow, friends, this year tax audit is very special for all of us because latest tax audit form is not yet published by the CBDT, and still we have to complete our tax audit before 31st October. So this thing says that department is not ready with their forms, but we should be ready filing our tax audit on or before due date. As Pramod ji correctly said, it is sometime it is the domain of the assessees and the clients to go for the extension. But somehow directly or indirectly we are representing our clients, so we are focusing to the CBDT and the department for the extension. So friends, Pramod ji already discussed about the brief about the applicability part and some important aspects. I will try to discuss and share my experience with you. I will discuss some clauses on GST in Form 3CD, which is very important and which I feel important during our tax audit. So friends, firstly, I would like to inform you that friends, on 1st October 2020, CBDT had made some changes in the Form 3CD, and such new utility is yet to come, and still that utility is not available at the income tax portal, but still we are required to file the form. So friends, I want to give you one clarification here that if today I will upload any kind of 3CD form, same the form is still applicable and it will not be treated as invalid, because we have to file our form, whatever form is already available at the portal. Therefore, if amended form is not yet available, still we are required to file the old form, and the same form will be accepted by the department. There is no any hesitation over that we are required to file the new form only. So it will be applicable and validated even if we are filing the old form. And apart from that, there is some major changes in ITR 6 also related to section 115BA, 115BAA, 115BAB. As we know that friends, there is some changes in last financial year related to for the domestic company with boosting the economy. So these are corresponding changes are made in the 3CD and respective changes are made in the ITR 6. And still ITR 6 are already there because it has amended on 10th of October. So if today I will file any ITR 6, in that we will found such changes, because in ITR 6 corresponding changes are there. Like there is a change in the depreciation rate of 40% in plant and machinery, and we are required to disallow our unobserved depreciation and carry forward losses, and these kind of changes are already in ITR 6. But only we all are waiting for the Form 3CD, latest Form 3CD. So friends, let's move some important point. Before moving that, friends, I want to inform you that the due date of our MEA form has been extended to 6th of November. Earlier it was 23rd of October, and due to the impact of COVID, ICA has been extended to the 6th of November 18. So now moving to the close by close discussion on the 3CD. So friends, whenever we are doing any tax audit for any corporate entity like company or private limited company and a limited company, so our emphasis should go on the whether is there any increase in the share capital or authorized capital. If there is any increase in the authorized capital in that particular previous year, then we should aware that there must be some payment of the ROC fees. And as per the Supreme Court judgment also, the whatever ROC fees we have paid, such ROC fees paid will be treated as a capital expenditure, and same is required to be disallowed in our income tax computation. And as well as we are being a tax auditor, it is our duty to disclose such capital expenditure in clause number 17A. And first, correspondingly, you are required to check if there is an issuance of share capital. Form 61A, that is called specified financial transaction, SFT, is also required to file. So friends, by checking one point, your 2 points will get clear. First is for the disallowance of the capital expenditure in clause number 17A, and other is the for checking of 61 form number 61A, that is called SFT.
So this is one of the very major thing. Generally, amount of the ROC fees is we found in the duty and taxes head, and practically difficult for us to identify. But by checking increase in capital, we can trace it very easily. Now move to second very important point, which we are facing from last 2 years. We are getting many notices under 143(1)(a). The issue is that friend, ESI and PF. Firstly, friends, I want to clear here that in case of ESI and PF, we are required to report in Form 3CD only employee contribution. Generally, in profit and loss account, we have a employee contribution and as well as employer contribution. So section 43B is applicable on employer contribution, and another section is applicable on employee contribution. And as per 43B, employer contribution can be deposited up to due date of filing ITR. But in case of employee contribution, same is required to be deposited up to the due date of respective act. So friend, what actually and what is the general practice? Many professionals are putting both the figure together in the Form 3CD, and if there is any delay, then the complete amount becomes disallowed. And in last 2 years, when CPC Bangalore processing returns in 143(1)(a), many people are getting notices, and I am sure that if many of us are doing in practice and facing this kind of notices, and later on we are required to revise our tax audit return and quantify the employee contribution and reduce the amount in the Form 3CD. So friends, keep in mind, always try to write the employee contribution in 3CD, not to employee contribution. So this is one of the very important point in 3CD we should take care. And friends, apart from that, there is a clause number 27A that's belong to the input tax credit. So if we see the table, we will find that there is the opening balance, amount availed, amount utilized, then there is a closing balance. Earlier, we are required to report the service tax or excise balances and input tax credits. But after GST last year, there was amendment is already made. But friend, still the word is coming there, central value added tax. So we should treat that as a GST, and we are required to report all the things like a opening balance, utilize, availed, and the closing balance. Friends, kindly keep in mind in that we are required to report all the three heads like a SGST, CGST, and IGST. Some of the professionals having view that it is written there central value added tax, so only IGST or CGST will be there. But friends, it is not the intention of the income tax department. Their intention is to cover the complete thing. So kindly make a note, all three heads like CGST, SGST, and IGST, we are required to report in clause number 27A. So friends, now moving to the next point. Next point is basically very important, 269 ST. Section 269 ST and SS are very important, which we have dealing from a number of years in 3CD and ITR also. So friends, recently there is some amendments like if we are dealing in the property and giving the advance more than 20,000 rupees, that things are also required to be reported in 269 ST. So therefore, friends, kindly keep in mind, earlier we have a perception that only loans amount are there, other transactions are not there, but some specified transactions are also required to report in 269 ST and SST. And therefore, one more thing I want to let you know, friends, as per law, we are required to report only the receipt part. If we are receiving any amount in cash more than 2 lakh rupees, that and that point that we are required to and in cash loan especially. But as per the utility, somehow we are also required to the payment part. So friends, I will let you know that in making payment, it will be disallowed, not penal provision to 69 SST and SST applicable. Only the expense will disallow. But for checking to whom you have paid make the payment, to identify such person who received the cash from you, it is they have provided the provision in 3CD, so that they can also trace the other person who is the recipient of such cash loan and advances. So now moving to next point, point number 5, that is called ICDS. ICDS, friends, as we know that income computation disclosure standard, in that there is a one clause belong to the stock. So friends, as per Income Tax Act, somehow we are required to follow the inclusive method, but majority of the clients and SSC are following the exclusive method. That means in the sale amount, they are not disclosing their GST. So that's called the
exclusive method. But as per income tax and as per ICDS, somehow we are required to follow the inclusive method. Therefore, it is paramount important for the tax auditor to provide a comment in their 3C or 3CB that assessee is not following the inclusive method and assessee is following the exclusive method. Because as per ICDS, it is not allowed to follow the exclusive method. So this comment is very much important for the tax auditor point of view. So friends, now moving to next point, as Pramodji also informed that we are required to provide all kind of our comments in form 3CB and 3CA. So whenever you feel that there is any kind of lack of the vouchers, I will take one example with that, like a voucher self-made, basically self-made voucher, that means which don't have any kind of supporting, like a conveyance, some staff welfare. This kind of voucher doesn't have supporting generally. So this kind of comment we are required to made in form 3CB, that there are the we have made the sample basis, we have checked, and on sample basis there is self-made voucher without any supporting. So friends, if some voucher without any supporting we are not mentioning in the comment section, so it may increase the liability of the auditor. Therefore, somehow it is important to mention in the 3CB and 3CA. Next, moving to next point, friend, as I discussed you, SFT reporting. In case of if you are receiving any payment more than 2 lakh rupees, SFT reporting is mandatory. And if assessee not made such reporting, not filed form 61A, then it is required to disclose in form 3CB, 3CD. So in my practical experience, I found in many cases client is receiving the amount because they feel that only expenditure part can be watched for the cash point of view, not the receipt part. But even if receipt part is very important, if we are receiving a single transaction from a client with more than 2 lakh rupees, then the compliance of SFT is required and same is required to be reported in 3CD. So for tax audit point of view, there is a two important thing. One is the compliance of 3CD, SFT, and other is the reporting in the 3CD. Moving to next point, and this is a very basic point in tax audit. Whenever we are required to mention that what kind of books of accounts assessees are maintaining, generally we do copy paste. We mention vouchers, cash ledger, bank book, and all these things generally we mention. And when we go, even we mention the stock register. And practically, very few assessees are maintaining the stock register. They don't have the stock register manually. So if we write that computerized cash ledger, computerized stocks register, even one point I want to add here, if assessee is not bifurcating the quantity of the stock and he is just mentioning the value, so friend, we cannot say that it is the maintenance of stock register until unless assessee is maintaining quantity wise stock register, whether it is in Tally or other software, whether it is in manual, then only we can say stock register are maintained. Otherwise, we cannot say stock register are maintained. So we should write that computerized voucher maintained, computerized cash book, computerized bank book. This kind of word, if you use the computerized, it will very helpful for tax auditor later on to escape their liability. Because once any document is not available, and how you can say that you have audited that thing. So this is a very important advice from my side. And then let's move to next point. So friend, as we know that last year CBDT has changed the rate of depreciation on computers. Earlier it was 60%, now reduced to 40%. And somehow still some professionals are still charging it 60%. So friends, keep in mind for making this kind of correction, because yes, last year it was the first year. So I found in many cases it was not corrected. So it keep in mind for correction point of view. Now move to the next point. This point is covered by Pramodji also, that whenever we are making any tax audit report, in case of, especially in the case of proprietary and partnership firm, we should try to mention the related party disclosures in that, so that our compliance in point number 23. Point number 23 of tax audit say about the related party transactions. So we can cross check from there. And in case of corporates, whenever we are filing, compiling 3CD, so check whether from notes of accounts there is a transaction of AS 18. Try to compare that all the transactions are already covered or not. In case any transactions are not covered, try to check, because whenever we go for the assessment part, assessing office is generally checked from AS 18.
whatever notes statutory provided in the notes of accounts, we generally try to match with the point number 23 from there. So it is paramount important to refer the related party transaction. But in case of partnership and proprietorship firm, if we are not making such disclosure in our notes of accounts, so we try to make such notes. Moving to next point, point number 27B. That's friend basically belong to the prior period expense. Many of us know the concept of prior period expense very easily, but for tax audit point of view, friends, I want to add something here that if any invoice which we have received pertain to the previous year and receive in the current financial year, and we try to book the expense in the prior period and try to disallow in point number 27B. Friends, I want to add here that in case you have received the bill in a current financial year, even if the services and the goods have been received in the previous financial year, somehow you are required to treat such goods and services in the current financial year. You cannot say such invoice is belong to the prior, such expenditure belong to the prior period expenditure until unless invoice date, services, goods received, all are compared to the previous year. You just receive the bill in the current financial year. So just receiving a bill is a very important event. If you have already received the bill earlier and just make the payment in current financial year and you have not booked the earlier, in that case we can say it is a prior period expense. But if you have actually received the bill in the current financial year pertaining to the earlier financial year, it is not to come under the clause 27B in the prior period expense. So friends, I was discussing with you some of the important points. We will also take here some questions. Next, moving to the closing stock. Friends, I found many times whenever we are filing Form 3CD, many of us are not filling the closing stock there. So friends, if we are not qualifying that company is not maintaining the stock-wise detail and we are not filing in 3CD, so something it becomes the contradictory. On one place we are saying there is no qualification, that means company is maintaining, and when in clause number 3CD we are not filling the detail, so thing becomes the contradictory. So therefore I request all professionals kindly fill a detail of closing stock also in a quantify manner. Moving to next point, about point number 34 A, B, C. So friends, as you know that it is required to disclose TDS return. That assessee is TDS deducted by assessee. In that case, we say yes, and thereafter we are required to fill the complete TDS detail. So friends, somehow such TDS detail is required to be matched with your books of accounts. Try to reconcile the amount with your books of accounts. Suppose we are showing in 192 salary head. So if we are not deducted any amount on which TDS is not applicable, try to include that figure also, so that your ultimate expenditure which is debited in the P&L account is matched. Because when now the assessment will be in a faceless manner, and something which is on record and which is justified by replying it very easily is only a ultimate way for us to explain our point. Therefore, it is advisable in point number 34 A, B, C, D, we are required to match the expenditure with our books of account. Although I understand it is very difficult practically to matching and doing such reconciliation, but we should try at the best possible manner because it will help you in doing faceless assessment where we have to write each and everything to someone to whom we cannot meet practically. So it is advisable and doing our tax audit by keeping in mind that everything should be self-explanatory. Okay. One thing I want to tell you, friend, here with my personal experience, generally filling the utility. Apart from that, I am also maintain same 3CD in the Word file also, and get it signed by the client and try to put maximum observation in the form. Like suppose if you are filling a utility and mentioning some portfolio losses detail. So in utility, space is limited and column is limited. But whenever I am writing same thing in the Word file, I have a unlimited space. Okay. So writing everything in a comment section, and I upload that thing along with the in other attachment. As you all know that whenever we are uploading Form 3CD, there is a requirement to upload balance sheet, P&L, cost of report, and there is some space for the other also. So in the others part, I generally attach the scan copy
which is duly signed by the SSC and me as well. And I also mentioned in 3CB and 3CA that complete observation is attached here with in the form of signed 3CD. So it will escape you in the future liability whenever any point raised by the department later on based upon your tax audit. So if we find that kind of attachment, it becomes self-explanatory, and in faceless environment, it becomes very easy for all of us to explain to the assessing officer. So friends, these are some of the points which I have noted down for you to discuss in detail. I like to take some question in between. Thereafter, we will discuss some more points. So if I see the chat box, so friends, if you have any doubt, you can write me in the chat box. You can take your queries also. There is a question from Mr. S.N. Mishra. Company has made payment towards professional fees to ABC and company, in which director is a partner or relative is a partner. Whether the said transaction is covered under 40A2B for company tax audit clause number 23 of CCD. Professional fees to ABC and company in which director is partner और रिलेटिव ऑफ द डायरेक्टर. यस सर, अगर आप जो डायरेक्टर है वो अगर पार्टनर है या जो उनके रिलेटिव हैं वो भी अगर उसमें है अगर, तो ये कहीं ना कहीं 48(2) भी है, ये एप्लीकेबल हो जाता है और वो आपको यू आर रिक्वायर्ड टू शो इन रिलेटिव वाली ट्रांजेक्शन. मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट रिगार्डिंग डिस्कस क्रेडिट फॉर्म 6 एंड व्हाट कैन बी नॉट एप्लीकेबल. संस्कार जी पूछते हैं सर, इन जो हमारी जीएसटी क्रेडिट का फॉर्म है बहुत सैनवेट वर्ड लिखा हुआ है. फ्रेंड वहां पे वर्ड तो सैनवेट है, बट लास्ट टाइम एक अलग से नोटिफिकेशन आया था, सर्कुलर आया था सीबीडीटी का, जिन्होंने कहा था कि यहाँ पे जो वर्ड है उसको सैनवेट ना पढ़ के जीएसटी पढ़ा जाए, बट प्रैक्टिकली उन्होंने अब तक फॉर्म में चेंज नहीं किया है. बट उस वर्ड को आपको सैनवेट ना पढ़ के जीएसटी ही पढ़ना है और उसमें जीएसटी की रिपोर्टिंग करनी है, ऑल इनपुट टैक्स क्रेडिट की. Please cover disclosure in Form 3CD for the ITC credit under GST. Thank you for the cover. It is enough to show movement in ITC ledger. Yes, वेंकटेश जी, राघवन जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि हमें सैनवेट ना पढ़ के उसको जीएसटी पढ़ना है और जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट से ही उसको लिंक करना है और तीनों तरह के क्रेडिट हमें मेंशन करने हैं, आईजीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी. डोंट कंफ्यूज दैट कि अगर वहाँ सेंट्रल वर्ड लिखा है तो हमें सिर्फ सीजीएसटी या आईजीएसटी को रेफर करना है, उसको हमें एसजीएसटी को रेफर करना है. और वी आर एक्सपेक्टिंग कि वो चेंज कभी भी हो जाएगा. माइट भी डिपार्टमेंट का उस पर अभी निगाह नहीं गई कि वहाँ पे वो वर्ड की कमी है, वो प्रॉपर्ली मेंशन नहीं किया गया है, बट सूनर और लेटर वो चीज आपकी अमेंड हो जाएगी. बट एज लास्ट ईयर वो ऑलरेडी कंफर्म हो चुका है डिपार्टमेंट की तरफ से, तो आप उसको जीएसटी ही पढ़ें. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम आरसी पांड्या जी. इन केस ऑफ एओपी हैविंग रेरा प्रोजेक्ट, audit report as per RERA Form 5 is required, where no place to report on true and fair view of accounts, where any qualification pertaining to accounts to be reported in 3CA. आरसी पांडे जी, एक्चुअली देखो दोनों ऑडिट बिल्कुल अलग अलग ऑडिट है आपके. जो आप रेरा का ऑडिट कर रहे हैं फॉर्म 5 के अंदर वो एक अलग ऑडिट है, और ट्रांजेक्शन बेस्ड, टर्नओवर बेस्ड जो आप ऑडिट कर रहे हैं आप इनकम टैक्स के अंदर, वो एक अलग ऑडिट है. तो आप दोनों को लिंक नहीं कर सकते. अगर आपको लगता है फॉर्म 5 के अंदर कोई ऑब्जर्वेशन का पॉइंट नहीं है तो आप उसमें लास्ट में लिख सकते हैं आवर ऑब्जर्वेशन एज अटैच, और उसके साथ आप अपनी ऑब्जर्वेशन को अटैच कर सकते हैं. और इनकम टैक्स प्रोविजन के नॉन कंप्लायंस का जो भी आपकी ऑब्जर्वेशन है आपको उसको 3CA में लिखना है. आपको डायरेक्टली फॉर्म नंबर 5 को या रेरा की रिपोर्ट को रेफर नहीं करना है, आपको 3CA के अंदर. आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको पांडे जी. आप कुछ कहना चाहते हैं विजय जी? अगर किसी को अपनी क्वेरी वर्बली भी रेज करनी है तो ही कैन रेज, वी विल अलाउ, you can unmute yourself and ask the query directly. Yeah, you can raise your hand and we can allow you to speak. फ्रेंड एक पॉइंट बताना चाहूंगा, जैसे 3CD के अंदर एक डिमांड और रिफंड का पॉइंट होता है हमारे पास. उसमें हमको इनकम टैक्स के अलावा जितने भी रिफंड होते हैं, चाहे वो जीएसटी का है, सर्विस टैक्स का है, कोई एक्साइज से रिफंड है आपका, वो सब आपको मेंशन करने होते हैं उसके अंदर. इनकम टैक्स का रिफंड मेंशन नहीं करना होता उसके अंदर.
तो काइंडली कीप इन माइंड, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहती है कि वहाँ पे अगर वो रिफंड और डिमांड की बात कर रहा है, वो कई लोग क्या करते हैं उसमें टीडीएस की डिमांड मेंशन कर देते हैं, जो ट्रेसिस पे टीडीएस की डिमांड आ रही होती है। तो फ्रेंड उसमें इनकम टैक्स, देखो इनकम टैक्स का अगर हम कोई फॉर्म फाइल कर रहे हैं उसको इन्फॉर्म करने के लिए ये हमारे अगेंस्ट आउटस्टैंडिंग डिमांड है या रिफंड है, तो जो इन्फॉर्मेशन उसके पास ऑलरेडी है उसे समाव हमें डुप्लीकेट नहीं करना है उसको। तो ये क्लियर है कि हमें इनकम टैक्स की डिमांड या रिफंड्स को वहाँ मेंशन नहीं करना है, उसके अलावा जो भी डिमांड और रिफंड है उनको मेंशन करना है। नेक्स्ट, treatment. Next question is from Mr. Rakesh ji. Treatment of mobilization advance received by construction company following cash system of accounting. This is one of the thing which is very disputed, especially for tax audit point of view. If we have received any kind of mobilization advance, so what's the treatment in books we should do, and somehow if we are following the cash method of accounting. Friends, as you know that in construction company. Shall I ask my query? Yes, sir, you can ask, sir. Yes, sir. Suppose my client's turnover is 1.40 crores, and if he declares income less than 6% or 8%, whatever it is applicable, then whether that 2 crore limit of 44 AD will be applicable, or we have to take it under section 44 ABA above 1 crore audit. Sir, as we know that 44 AD is applicable up to the turnover of 2 crores. Okay. In this case, if turnover is less than 2 crores, that is in your case 1.40 crores. Okay. So in that case, if you're showing profit is less than 6 or 8%, Yes. then we are required to do audit. There is no option available with us. If I say turnover is less than 1 crore, okay, sir. And even then, if you are showing profit less than 6% or 80%, even then tax audit is applicable. Yes, so up correct. To But that up to 2 crore, there is no option available. If we are showing profit less than that, then we have to do the tax audit only. no, here, hello. Yes, sir. My query is whether we should audit considering the limit of 1 crore here, because the profit is shown less than 6%, 8%. You should Though do turnover audit in, is below 2 crores. yeah, you should do audit in 44 ABE, E for elephant. E. Okay, yes, E. That is under section 44 AD. AD, yes. Yes, ABE means under section 44 AD. Yes, as sir. the turnover is less than 2 crores, Yes. but income is less than 8% also. Yes, sir. Oh. I am informing you the exact provisions. What is why it is, because 44 AB is a generalized provision of tax audit, and 44 AD is a special provision, and which is applicable in a specified transaction only. Specified meant which is applicable on the HUF partnership and proprietorship form only, not applicable on the company, and not applicable on the LLP, and not applicable on the commercial income. So Correct. always a specific section prevent the general section. So 44 ABA is a general section, and 44 AD is a specific section. Therefore, in your case, tax audit is mandatory. No, tax audit is mandatory. It is agreed. Hey, I agree. I mean to say that you will do the audit in 44 ABE. Yeah. That is. Are you confirmed? I am confirmed, sir. I am confirmed. Even Pramod sir, you also discussed the same provision some time back. You can refer this session, sir. This session is also available on YouTube, Chamber of Commerce. So you can go to YouTube. You can see the earlier session also. You have missed that. But on that opinion of tax guru observation, they says that wherever the assessee was subject to tax audit solely on the ground of section 44 ABE and not in conjunction with section 44 ABA, it could be observed that the turnover in all those cases is less than 1 crore. Sir, actually, sir, it is hardly matter, because if you are doing tax audit, whether you're doing in a 44 ABA or ABE, it will not. It hardly matter for you, and it will not make any difference. No. ABA has we have got limit of 60 audits. Yeah. And ABE 44 AD we have no limit of our ICI. Okay. So this point is important, whether it should be covered under section 44 AB A
or ABE? Actually, sir, I totally catch your point. I understand the issue which you actually want to raise here. In my humble opinion, that if turnover is more than 1.4, more than 1 crores, and it should be go into the 44 ABE only. Not if turnover is beyond 2 crores, then we are escaped from Yeah. 44 AD. That Yeah, is correct. Yeah, in that case, we don't have a choice. But up to 2 crores, somehow we are in 44 ABE only. Hello. Okay. Hello. May I raise the question? Yes, Pandit ji, yes. पहले किया था शायद। Basically, my UP तुमने भी किया था, बट शायद मेरा बिजी जा रहा था उसके बाद में। and मेरा we ये have क्वेरी था कि अगर हम कोई as per the के साथ पार्टनरशिप करते हैं, लाइक सुमन के साथ, it बहुत is सारे मैटर report is to be given in form 5. Unmute करा आपल्याला. 5 is very specific. Okay. सर आप ना म्यूट हो गए हैं, एक बार आप अनम्यूट करेंगे पांड्या जी? Sorry. Yes. Basically, RERA Form 5 has only certain points relating to RERA Act. Yes. There is nothing about the true and fair view of the accounts. Now, Form 3CA, if tax audit says that in case of audit under any other law, so audit is done under RERA, and Form 5 audit report is issued. And suppose I have certain observation relating to true and fair view of the account. Here we have to report because Form 5 has no column, and in tax audit 3CA is there. So 3CA में only observation relating to 3CD we can give, not relating to true and fair view of the account. So this is the my question. Okay. how to report it. Pandya sir, actually, as far as my understanding, Form 5 of RERA is not actually audit report. It is some kind of certificate, because unless we mention that true and fair, it becomes a certificate. And when we write the word true and fair, it becomes some kind of audit. Okay, so don't treat and confuse by the non-availability of word true and fair. If true and fair word is not available, then treat it as a certificate, and it will not treat it for 3CD point of view. It will not treat it as the audit, and therefore Form 3CB and 3CD will be applicable in your case. But this 44 AV says that if audit is done under any other law, here audit, the RERA says that audit is to be carried out and a report to be issued in Form 5. That is so the word audit is there. And I agree with you. The word audit is there, but when we see the Form 5, you will not find audit word anywhere, and true and fair word will be not be there anywhere. And true. Without the word of audit and without the word of true and fair, an audit report cannot be complete. Okay. Are you agree or not, sir? So here 3CA will not be applicable. Yes. Yes. In my personal opinion, 3CA will not applicable. Only 3CB will applicable here. Okay. Okay. I think we got some question in the chat box also. क्या जी किसका क्वेश्चन है जी? निशान देसाई जी का क्वेश्चन है, निशान जी, if a cooperative housing society receive is in excess of 1 crore, but that cooperative society is not doing any business, so whether a tax audit will be applicable? So I think in my opinion it is not applicable because it is not doing any business. Yes, if any cooperative society getting the amount from his member and expanding the amount on his member, मतलब अपने मेंबर से पैसा लेके और मेंबर पे खर्च कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअलिटी के अंदर उनकी इनकम एग्जम्प्ट होती है. ओके, बट उनको रिटर्न फाइल करनी होती है, टैक्स ऑडिट की उनको रिक्वायरमेंट नहीं होती उस केस के अंदर. बिकॉज क्या होता है, बिजनेस एक्टिविटी किससे होनी चाहिए? नॉन मेंबर से होनी चाहिए. अगर आप मेंबर से पैसा लेके मेंबर पे खर्च कर रहे हैं तो वो कोई बिजनेस नहीं है आपका, वो कहीं ना कहीं एक तरह से म्यूचुअलिटी कॉन्सेप्ट के अंदर एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, आप सर्विस दे रहे हैं बेसिकली, तो बिजनेस ट्रीट नहीं किया जाएगा. लोकनाथ सागर जी का क्वेश्चन है, whether loss in the firm or of individual required to file tax audit if their turnover is less than 1 crore. वेरी गुड क्वेश्चन लोकनाथ जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस पे काफी क्लैरिटी भी मैं आपको बताऊंगा क्या क्लैरिटी है इसके अंदर. जैसे आपको पता होगा इन केस ऑफ पार्टनरशिप उनके कोई भी लिमिट नहीं होती कि उनको किस केस में आईटीआर भरनी है. इन केस ऑफ पार्टनरशिप हमको चाहे उनको लॉस है, ठीक है, उनको तब भी आईटीआर भरनी है. बट इन केस ऑफ
इंडिविजुअल के केस में अगर उसकी इनकम 2.5 लाख से ज्यादा होती है तभी उसके लिए आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न को भरना कंपलसरी होता है। ओके, अगर उसको लॉस है उसको रिटर्न भरना कंपलसरी नहीं है, बट लेकिन उसको लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना है इसलिए उसको रिटर्न भरना कंपलसरी है। तो अगर हम 44 एडी की बात करते हैं, अगर उसकी टर्नओवर 1 करोड़ से कम है, पहले हम बात करते हैं इंडिविजुअल की। अगर एक इंडिविजुअल की टर्नओवर 1 करोड़ से कम है और उसको लॉस है, ओके, तो उस केस में उसको 44 एडी के अंदर ऑडिट करवाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज वहां साफ साफ लिखा है 44 एडी के अंदर, इफ योर इनकम इज मोर देन मैक्सिमम अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स। ओके, तो वहां पे जो 2.5 की लिमिट है, अगर उससे कम उसका प्रॉफिट है या उसका लॉस है इंडिविजुअल को, तो उस केस में उसको रिक्वायरमेंट नहीं है कोई भी टैक्स ऑडिट की। बट इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जैसे पार्टनरशिप केस के अंदर मैक्सिमम अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स कुछ होता ही नहीं है, तो उसके केस में अगर पार्टनरशिप फर्म है, अगर उसको लॉसेस भी हैं अगर, तो उसमें यही कहा जाएगा कि अपने टर्नओवर का उन्होंने 6 या 8% नहीं दिखाया, देयरफॉर दे आर लायबल टू डू टैक्स ऑडिट। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको लोकनाथ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, sir, should we investigate into SFT information in 26 years of client under tax audit? सर आपको सिर्फ 26 years में नहीं जाना, आपको अगर आपने जब उनकी बैलेंस शीट को देखा, आपको लगता है किसी ट्रांजेक्शन पर 26 SFT एप्लीकेबल है, तो आपको क्लाइंट से SFT जो रिटर्न फाइल के लिए उसकी कॉपी ऑब्टेन करनी है, उन ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करना है कि जितनी ट्रांजेक्शन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आ रही है उनसे सारी रिपोर्ट हो गई SFT के अंदर, और अगर रिपोर्ट नहीं हुई है तो आपको फिर 3CD में आपको रिपोर्ट करना है। और अगर क्लाइंट ने फाइल ही नहीं करी है अगर, तो फिर आपको जो आपका कॉमन कमेंट से 3CA और 3C में वहां पे आपको मेंशन करना है कि क्लाइंट हैज नॉट फाइल्ड द SFT रिपोर्टिंग। संगम जी क्वेश्चन है, हाँ जी, ट्रीटमेंट ऑफ मोबिलाइजेशन ऑफ एडवांस मनी रिसीव्ड बाय कंस्ट्रक्शन कंपनी फॉलोइंग कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। एक्चुअली मैं इसका जवाब पहले ही दिया था, बीच में रह गया था जी। इसमें क्या है, बेसिकली जब कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी होती है उनके लिए एक अलग से हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है कि वो जो अपना कंप्लीशन मेथड के बेस पे अपनी रेवेन्यू बुक करेगी। तो एक तरह से क्या है, अगर मोबिलाइजेशन एक्सपेंस क्या होते हैं कि आपको काम करने के लिए कुछ पैसा एडवांस दिया गया है, तो वो कभी भी क्या होगा, वो आपकी इनकम में बुक नहीं हो सकता, बिकॉज आपकी जो भी इनकम बुक होगी वो कहीं ना कहीं कंप्लीशन मेथड के बेस पे बुक होगी कि आपने उस प्रोजेक्ट में कितने % कंप्लीट कर लिया है। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद आपको एक आर्किटेक्ट से सर्टिफिकेट लेने के बाद उसके बाद आपकी इनकम बुक होगी। आपने जो भी एडवांस लिया होगा वो आपके पास एज ए एडवांस ही ट्रीट होगा और उस एडवांस वो आपकी इनकम में नहीं आएगा। बट मैं यहाँ पे एक बात ऐड करना चाहूंगा, फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी इट विल ट्रीटेड एज एडवांस एंड जीएसटी की लायबिलिटी आ जाएगी। इनकम टैक्स में क्लियर है, इनकम टैक्स की लायबिलिटी नहीं आएगी आपके ऊपर, वो आपकी बुक्स में बैलेंस शीट में आ जाएगा एज ए एडवांस। बट फॉर जीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा इस एडवांस के ऊपर। किसकी? खाटर पोल्ट्री डायरेक्टर रिपोर्ट। हेलो हेलो, आगरा से उज्जवल जैन बोल रहा हूँ, एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। हाँ जी, यस। आपने बताया कि प्रोप्राइटरशिप में अगर 2,50,000 से इनकम कम है तो उसे रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है। हाँ, वो तो सेक्शन 139(1) है ना सर आपका। नहीं, 139 सेक्शन 1। ये जो 8% से 6% से अगर इनकम कम है तो वो टैक्स ऑडिट वाला प्रोविजन लागू नहीं होगा उसके नहीं ऊपर? होगा, नहीं होगा सर, नहीं होगा सर, नहीं होगा। आप मतलब मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, चाहे अभी आपको 44 एडी में साफ साफ लिखा हुआ है, इन केस ऑफ इंडिविजुअल अगर आपकी इनकम इज लेस देन मैक्सिमम अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स व्हिच इज नॉट टैक्स, देयरफॉर एप्लीकेबल नहीं है। मतलब 2.5 से अगर आपकी इनकम कम है, अगर आपकी टर्नओवर चाहे 2 करोड़ से कम कितनी भी है आपकी, एक्चुअली क्या है, देखो अगर आपने 1 करोड़ से कम में भी एप्लीकेबल है, 1 करोड़ से ऊपर जाने के बाद आपका क्या हो जाएगा, 44 ए बी एएफएफ एप्लीकेबल हो जाएगा। तो अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ से कम है और आपकी इंडिविजुअल की इनकम 2.5 से कम है तो आप टैक्स एप्लीकेबल नहीं है 44 एडी के अंदर। ओके, अच्छा अच्छा, ठीक क्लियर है। है जो जी? में कर रहे थे ऐसे वाले केसेस को? हाँ जी, हम तो एडी में कर रहे थे ऐसे वाले केसेस को। नहीं सर, रिक्वायरमेंट नहीं है करने की सर, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। आप सेक्शन देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा, कोई एम्बिग्यूटी नहीं है सर उसका। क्लाइंट को कह देंगे तो नुकसान हो जाएगा। वो वाला पार्ट आपका विजय जी देखेंगे एक्चुअली आपके नुकसान को कैसे भरपाई करनी है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, रविशंकर जी। If a proprietor has two business, A and company and B and company, and both need to tax audit.
if proprietor has two business, A and company, B and company, and both need to tax audit, how issue 3CDB in both the business? So तो सर इस केस में क्या है, हम उसके दो 3CD बनाएंगे अलग अलग, ए एन कंपनी का अलग बनाएंगे, बी एन कंपनी का अलग 3CD बनाएंगे और दोनों को अलग अलग अपलोड करेंगे। हम एक ही पैन नंबर में मल्टीपल 3CD अपलोड कर सकते हैं, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मैंने खुद ही काफी इंडिविजुअल्स के करे हैं, तो आप कर सकते हैं अपलोड। जब भी उसकी आप आईटीआर भरेंगे, उस आईटीआर के पर्पज से जिसकी दोनों बैलेंस शीट होगी उसको मर्ज करके तब वो उसकी आईटीआर भरेंगे। और जब आप 3CD अपलोड करेंगे तो उसमें रिस्पेक्टिव बैलेंस शीट अटैच करेंगे। आई थिंक ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है सर, बट कंपनी इज फॉलोइंग कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, so why mobilizing advance not considered as income on the receipt basis allocate against invoice in future? नहीं सर, अलाउ नहीं है ना सर राकेश जी। एक्चुअली आई एम अज्यूमिंग कि आपकी कंपनी है, इट्स नॉट द इंडिविजुअल मैटर। तो कंपनी के केस में आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की फॉलो करना होता है, और कहीं ना कहीं इन केस ऑफ कंस्ट्रक्शन कंपनी परसेंटेज कंप्लीशन ही फॉलो करना है आपको, चाहे आपका मेथड ऑफ अकाउंटिंग कैश मेथड क्यों नहीं है आपका, तब भी आपको उस कैश के बेस पे अपनी इनकम बुक करनी नहीं है, वो एडवांस ही ट्रीट होगा आपका। और जैसे प्रमोद जी ने बताया कि इन केस ऑफ इंडिविजुअल ऑल्सो, अगर वो लेवल 1 लेवल 2 में कवर होते हैं तो उनके ऊपर भी अगर आप उसका टैक्स ऑडिट कर रहे हैं तो उसके ऊपर भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होते हैं, और आपको रेवेन्यू रेगुलेशन का ये वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होगा, और आपको यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू बुक दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम संकार जी। Financial 18-19 filed under normal accounts, not under 44 AD. For financial year 1920, if return is filed under 44 AD, will it treat is invalid? No. सर एक्टिव प्रोविजन क्या है यहाँ पे, अगर 44 AD में आपने एक बार ऑप्ट कर लिया तो अगले 5 साल तक आपको उसको 44 AD ही यूज करना है, उससे आप बाहर नहीं जा सकते। तो आपने ऐसे कहा कि 18-19 में आपने नॉर्मल अकाउंट्स मेंटेन कर रहे थे, 44 AD में फाइल नहीं किया था, 1920 में आपने 44 ऑप्ट कर लिया है, तो अब आने वाले पीरियड के अंदर आपको नेक्स्ट 4 मोर इयर्स आपको 44 AD ऑप्ट करना है। उसके बाद आप पे चॉइस है कि आपको नॉर्मल अकाउंट्स में जाना है या फिर आपको 44 AD फॉलो करना है आपको। तो कोई इसमें ऐसी आपकी रिटर्न इनवैलिड नहीं मानी जाएगी, बिकॉज एवरी ईयर इज ए डिफरेंट असेसमेंट ईयर एंड इट इज अलाउड टू ऑप्ट द 44 AD. Opting out is not possible for next 5 years. This is the point. Since the provision speaks of income less than 8%, it does not talk of loss. Will it not amount to form also need to get cover under 44 AB? लोकराज सर, मैंने अभी एक्सप्लेन किया था, अगर आप सेक्शन 44A को वर्ड बाय वर्ड पढ़ेंगे, जो वहाँ पे वर्ड मेंशन है मैक्सिमम अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स, वो जो अप्लीकेबल होता है वो सिर्फ इंडिविजुअल के केस में होता है, क्योंकि सेक्शन 139(1) के अंदर जो 2.5 की लिमिट है वो इंडिविजुअल की लिमिट है, पार्टनरशिप की कोई लिमिट ही नहीं है। Therefore and henceforth we understand and conclude that in case of partnership firm having losses, even then they are required to do tax audit. No, my question is different. The client 26 has SFT reported by their bank and other. Should be given explanation in Form 3CD for such transaction? No, sir. Venkata sir, I am not talking about that point. I thought you are saying that on your client SFT reporting is applicable, but in your case, in your client, someone has reported the transaction and you are required to check such transaction is duly accounted for in your books of accounts. And if such transactions are not accounted for in the books of account, then somehow you are required to report in 3CD. Otherwise, for reporting point of view, it is not applicable on you. It is very good question. Can partner firm avail 44 AD or for partner remuneration? So firstly, I am taking the example of a CA firm. Suppose I am a partner in a CA firm and getting the salary from the CA firm and getting the remuneration from CA firm. As per the provision of Income Tax Act, partner remuneration is treated under the head of profit and gain and business and profession in the hand of the partner. It is not treated as salary. So if we talk about 44 AD and 44 ADA, so it will come under 44 ADA, not 44 AD, because being a chartered accountant, whatever receipt you are getting, it is in the nature of professional receipts. So you are eligible to get 44 ADA. 44 AD is not applicable, and you are clearly get the benefit of 50% reduction in 44 ADA. There is no issue in that. Further to my query, which you had answered, that a proprietor can file 2 tax audit for the 2 businesses, but IT portal does not allow 2 tax audit, saying already filed, only revised. No, sir, no. I am not agree with your view. I
I have the complete detail of my clients with me. I cannot share you, but it is allowing you. If you are filing one tax audit, then again you can file the second tax audit also. Revision is not the issue. You can file multiple tax audit for the same client by the same start accountant also. Kindly try it filing at the portal. If you still come an issue, then you can contact us. We can see case to case basis. But last year also we have filed. This year we also filed. There is no issue as such. Yes. Sarkarji, can partner of a non-professional fund? Yes, they can go into 44AD. No issue in that. Friends, if any other want to ask any question, you can raise your hand. Vijayji will unmute yourself, and then we can discuss your query. Yes, Because correctly. to understand tax audit, somehow taking queries is more important than discussing close by close, because we all are doing tax audit from long period. So taking queries is very fruitful and useful for all of us. So friends, if you have any other question, you can raise your hand. You can unmute yourself. ये अभी ऑनलाइन सर एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूँ। हाँ जी। जैसे अभी मैंने पूछा था कि अगर 2.5 लाख से इनकम कम है तो प्रोप्राइटरशिप में आप कहते हैं रिटर्न फाइल करना जरूरी नहीं है 1 करोड़ से नीचे की टर्नओवर वाले में। सर देखो, मैंने पहले ये बोला कि टैक्स ऑडिट फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है 44AD के अंदर। बट रिटर्न फाइलिंग का भी सेम पैरामीटर है 139(1) वाला। बट लेकिन समटाइम क्या होता है, हमने जैसे आपने बोला कि 1 करोड़, तो दैट मीन कि उसकी 1 करोड़ के आसपास की उसकी टर्नओवर है। दैट मीन तो उसका कोई टीडीएस भी कटा होगा, उससे बैंक की ट्रांजैक्शन भी कटा होगी कोई ना कोई उसकी। तो question is different now. This time my question is different. My question is, if the turnover is less than 1 crore and the profit is above 250, then he has to file the return. Yes. But whether tax audit is applicable? Yes. 44AD. Yes sir. अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ज्यादा की है आपकी, अगर और आपने 44AD का जो पैरामीटर है 6 और 8% का, वो अगर आपने फॉलो नहीं किया, उतनी इनकम नहीं दिखाई, तो आप पे टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगा, करानी पड़ेगी। You are right. Thank you. नहीं, ये वही है ना आपसे। मैं उज्जवल जी के क्वेश्चन को एक अलग लेवल पे लेके जाता हूँ। जैसे उज्जवल जी ने कहा कि अगर इंडिविजुअल की इनकम सपोज 1 लाख रुपीस की इनकम है, उसकी 98 लाख रुपीस की सेल है, तो क्या हमें आईटीआर भरने की रिक्वायरमेंट है? अगर फ्रेंड्स मैं लीगली बात करूँ तो उसको रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज सेक्शन 139(1) के अंदर उसकी टोटल इनकम इज लेस देन 2.5 लाख रुपीज। बट फ्रेंड अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूँ तो कहीं ना कहीं क्या होगा, अगर जिस पर्सन ने 98 लाख रुपीस की टर्नओवर करी है तो उसकी जीएसटी रिटर्न भी फाइल हुई होगी, कहीं ना कहीं उसका टीडीएस भी डिडक्ट हुआ होगा, उसने बैंकिंग ट्रांजेक्शन भी करी होगी, तो देयर इज ए वेरी हाई चांसेस कि उसका हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन के अंदर एसएफटी में कोई ना कोई रिपोर्टिंग हुई होगी। तो उसकी वजह से क्या होगा कि उसको कल को नोटिस आएंगे कि उसने हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन में एंटर किया है और रिटर्न फाइल नहीं करी, इसकी वजह से उसको असेसमेंट होने के बहुत चांसेस हैं उसके। तो ऐसे केसेस में क्या है कि बेटर है कि आप अपनी रिटर्न फाइल कर दीजिए। और दूसरा क्या है, अगर आपको लॉस है तो आपका लॉस का कैरी फॉरवर्ड तभी मिलेगा, आपको अलाउ होगा जब आप उसको रिटर्न फाइल करेंगे। बिना रिटर्न को फाइल करे लॉस का कैरी फॉरवर्ड अलाउ नहीं होता। और तीसरी चीज फ्रेंड्स, अगर हमें लगता है कि सब उसकी डेप्रिसिएशन है, अगर हम रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तो हम सेम डब्ल्यूडीबी को कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे, ऐसा नहीं है। इनकम टैक्स के अंदर अगर हम किसी साल आईटीआर नहीं भरते हैं तो ये अज्यूम कर लिया जाता है कि वो डेप्रिसिएशन आपको ऑलरेडी अलाउ हो चुका है, और नेक्स्ट ईयर में उस साल की डेप्रिसिएशन काटने के बाद जो डब्ल्यूडीबी बचती है वही कैरी फॉरवर्ड आपकी होती है। तो इट इज एडवाइजेबल टू फाइल द रिटर्न टू कैरी फॉरवर्ड योर लॉसेस। Second, to escape yourself from getting a notices from income tax department. This is the point. And some of our colleagues are asking this kind of query also. Is sir, in case of financial year 18-19, our client are getting messages that you have entered into high value transaction and but not filed the return. So in case income is less than 2.5 lakh rupees, even then should we file the ITR? So friend, in this case, I advise my clients you should go for the ITR. Because if you not file the ITR and you have entered into some high value transaction, for example, you purchase some property, even then department can have a high value transaction, and based upon that they can open your scrutiny. But if you file the return, and generally income tax department will do, if you have entered into high value transaction and you have filed the return, and the chances of scrutiny become less,
And this kind of cases will called anonymous cases, non-maintenance of returns. Therefore, chances become scrutiny become less if you file the return, and penalty will also not applicable if you file the return is less than 2.5 even for the financial year 18-19. If your income is more than 2.5 lakh rupees and up to 5 lakh rupees, then penalty of 1000 rupees applicable, and your income is more than 5 lakh rupees, in that case penalty will be 10,000 rupees. So you should file the returns of your all the financial all the assessees who for financial 18-19, even they don't have a taxable income, but they have entered into the high value transaction. Friends, is there any other question, or should we conclude today's session? Pooja, So, please join the session. I think best takeaway for today is that if you are doing any tax audit in 3CB, we are required to obtain 2 UDIN, because as far as my earlier understanding, we are taking 1 UDIN only. So somehow kindly keep in mind to obtain 2 UDIN, one for the financial statement, one for the Form 3CD. So this is the one of the best takeaway of today's session, and important thing to note by all the participants. And thank you, Vijayji. Thank you, Vijayji. Thank you very much. And thank you, Poojaji, giving me opportunity to speak on this important topic. Over to you. Thank you, Sangam. Now, Pooja, I request please give Very a formal wonderful vote of session, thanks. Sangamji. Yes. Yeah, sure. Sangamji, was a very wonderful session. So you just had elaborated all the points and then taken very wonderfully all the queries. Almost all the queries has been raised, and you had just answered all of them. And even the live session has also taken some queries very live. So it was very wonderful session, and I suppose the contact details of Sangamji is also given, so anybody who wants can contact with to him for any personal query or something on tax audit scenario. So it was a wonderful session, and I sincerely vote of thanks to you from Chamber of Chartered Professional side, from the President side, and from the on behalf of all the members to be here to accept the very urgent to call to you on a very urgent basis that you have to come, and accepting the invitation and then delivering the session in a very wonderful manner. So thanks a lot, Sangamji. Thank you, Poojaji. Thank you for your